वॉल्यूम ऊपर करो उधर वाली इसमें आ रहा है but I cannot hear it. I don't know why. I can't hear anything either. Let's talk without it. I don't know. तुमने अभी ये ऊपर नहीं किया हुआ था. Oh, अच्छा. Does that matter? I think that matters. Sure. See if that works. Good afternoon हमारे सारे सुनने वालों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून. आज है थर्सडे और दोपहर को हम आते हैं प्रोग्राम लेकर हार्ट टू हार्ट और आप सुन सकते हो आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो कैरावान पर. और मैं हूँ the one and only सलोनी आरजे कल्पना. Play a song. And this is Saima. And this is Saima. Let's touch lives together. Alright, तो साइमा कैसे हैं आप? क्योंकि एनो पिछले हफ्ते मैं नहीं आ पाई थी and लग रहा था कि बहुत दिन हो गए मुझे स्टूडियो में आके. Well, we are doing great. Thank you everyone for joining us. अच्छा, तो आज जो है हम बात करने वाले हैं क्योंकि हम 3 हफ्ते से बात कर रहे हैं एक किताब जिसका नाम है The Four Agreements written by Don Miguel Ruiz and बहुत अच्छी किताब है अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं. And if you want to just explore this book, this is a wonderful book called The Four Agreements. And तो हमने 3 agreements already हमने cover कर लिए थे और आज हम बात करने वाले हैं fourth agreement के बारे में. वो क्या है उसके बारे में हम धीरे से बताएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं इस प्रोग्राम का पहला गाना. तो चलिए हम सब मिलकर सुनते हैं दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे. So we're having some technical issues. शुरू करने But में. I can hear you. You can hear I me? can hear you. So that means कोई छोटी सी glitch हो रही है. ये headphones की वॉल्यूम को तेज करो कल्पना. See, this is the max. This is the maximum volume. ये सही जुड़ा हुआ है ना? ये देखो तुम हमेशा फिक्स करती हो इसको. But see, सही है ना? वो क्या है? which one is this one? But I don't know. But I could hear you when you were talking. देखो So we just have to. स्टूडियो की वॉल्यूम को तेज करो. मे बी उससे शायद इम्पैक्ट हो. कम थोड़ा सा कम. नाउ आई कैन हियर. एटलीस्ट थोड़ा सा मुझे आवाज आए. थोड़ा सा और तेज करो. क्योंकि मैं जब वॉल्यूम ज़्यादा करती हूँ ये हो जाता है. स्टूडियो से आ रही है, इसमें से नहीं आ रही है. बट जब मैंने स्टूडियो ये ऑन किया ना तो तुम्हारी आवाज आ रही है मुझे. But when I'm turning the mic on, I could hear you. But I don't know, maybe I think headphone का problem है, but we still can hear you. अच्छा चलो इसको उतार के let's try. So sorry about the technical issues. We are starting our radio show. It's a heart to heart, and we come to you every Thursday. And जब तक we are alive, technical issues तो चलते रहेंगे. And that's what it is all about. There are technical issues, and we fix the technical issues. So कैसे हैं आप लोग सब? How's everyone doing? I hope मेरी volume, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है. I'll try to bring this a little bit here. दोस्तों आज हम सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं रेडियो कैरावान with me the one and only सलोनी आरजे कल्पना और मेरे साथ होती है मेरी co-host साइमा. और आज जो हम बात कर रहे हैं 4 एग्रीमेंट्स के बारे में. तो 3 एग्रीमेंट्स हमने कवर कर लिए हैं. आज 4th एग्रीमेंट है और अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ गाना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऑन एयर अभी आ सकते हैं. और स्टूडियो का नंबर है 214-817-3333. So we do a live stream every Thursday. आप अगर हमें स्टूडियो में लाइव देखना चाहें तो हम लोग we are streaming on my personal Facebook page as well, which is Saima Dillon. We thank you for joining us every week. हम आपके पास Thursdays को आते हैं. And पिछले 3 हफ्ते से I've been talking about the 4 agreements. मैं हर वक्त कोशिश कर रही होती हूँ कि उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जिन चीज़ों से हम अपनी ज़िंदगी को हम एक्चुअली एक बेहतर इंसान बन सकें. मुझे लाइफ में कभी ये फिक्र नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं या मैं किसी दूसरे की ज़िंदगी को किस तरह से मैं पिन पॉइंट करूं कि किस में कौन सी गलतियां हैं. मैं हमेशा फील करती हूँ कि मेरे खुद में इतनी ज़्यादा खामियां हैं, मेरे खुद में इतनी ज़्यादा इश्यूज़ हैं. मैं अगर अपने ऊपर ही फोकस करूं
तो मैं अपने आप को बेहतर इंसान बनाऊं. I want to be today a better version of myself than who I was yesterday. So with that, going into the fourth agreement, the first four agreements की हमने पिछले 4 हफ्ते से बात की थी, and this is the final fourth agreement, which is about always do your best. तो जिंदगी में जो भी करें, कभी हम जिंदगी में कभी खुशियां होती हैं, कभी गम होते हैं, कभी अच्छे लम्हे होते हैं, कभी बुरा वक्त होता है, पर जो भी वक्त होता है, आप अपनी हाई लो कैपेसिटी के अंदर जो भी आपकी कैपेसिटी है, just do always do your best. So it is about allowing, ये जो agreement है, this agreement is about allowing the other three agreements to always do your best. To the fourth agreement is all about action, to always हर चीज के अंदर जो भी आपका बुरा बुरा मोमेंट भी है, लो मोमेंट भी है, उसके अंदर भी जो आप बेस्ट दे सकते हैं, उसी लेवल के ऊपर बेस्ट दें. And always, nothing more, nothing less. Be impeccable with your word. Just you're always good enough no matter what. So with that, we realize कि जिंदगी में हर चीज, as long as we are alive, जब तक जिंदा हैं, we will always कभी high quality, कभी low. सॉन्ग खत्म हो गया. ऑलराइट, तो ये था दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे. और कुछ ऐसा ही हमारा टॉपिक भी है कि हमें जो है दुनिया में काम करते रहना चाहिए, यानी कि actions are very important. That means we need to always do our best, and that is what our fourth agreement is. And that's also, Saima, it's actually interconnected with all the three agreements that we were talking Absolutely. before. It just kind of like intertwined, क्योंकि एक के बाद एक आता रहता है सीक्वेंस. तो you always must do your best, क्योंकि हम दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे. लेकिन जब तक जो भी हम काम करते हैं वो हमारे पीछे जो हमारा बिहेवियर बन जाता है, हमारा नेचर बन जाता है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बजाय इसके कि व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि कि हमें भी वैसा ही करना है जैसे वो कर रहे हैं. तो आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग आवरसेल्फ मोर. And I think it's always about ourselves. It's always about us. How can you become a better version of yourself on a daily basis? And the first agreement was to be impeccable with your word. The second agreement was don't take anything personally in life. The third agreement was don't make any assumptions. And now we are talking about the fourth agreement, which is, always do your best. Absolutely. क्योंकि देखो, स्पेशली पहले के ज़माने में कि मुझे लगता है कि इतना अवेयरनेस नहीं था, इतना सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया भी है. एंड we must make a good use of it by just I mean, if you want to just learn a lot of things for your personal growth, go for it, do it. But then it's only should be for you and only you, not for showing to somebody, किसी को दिखाने के लिए या फिर किसी को शो ऑफ करने के लिए या फिर अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए नहीं. जस्ट दिखाने के लिए नहीं, you just do for yourself, because that's more important when you're complete within. So I think that's when it reflects on your nature, it reflects in the surroundings, and that's the only way where you can do best for others as well if you wish to do it. Absolutely. You're only able to give to others what you have within yourself. Right. So if you are giving others negativity, it means all that negativity lies within you. If you are giving others jealousy, envy, and आप हर वक्त बैठ के यही सोच रहे हैं कि यार वो कीड़े निकाल रहे हैं, क्यों दूसरों में कीड़े निकालते हैं, राइट? आप कीड़े दूसरों में इसलिए निकालते हैं कि वो चीज़ों की आपके खुद के अंदर इनसिक्योरिटी है, आप में कमी है. आप समटाइम्स इवन आप दूसरे को देखते हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ दूसरा कर रहा है जो आप फील करते हैं कि आप आई विश आई कुड डू दैट. एंड बजाय इसके कि आप दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दें एंड आप दूसरे को अपलिफ्ट करें, आप उल्टा रिएक्शन करते हैं. व्हाट यू डू इज आप उसमें कीड़े निकालने लगते हैं. आप यू स्टार्ट गॉसिपिंग अबाउट ईच अदर, बिकॉज गॉसिपिंग according to the author of this book, Don Miguel Ruiz, he feels that gossiping is actually black magic. When you gossip and when you sit with people and when you talk negative, जब आप दो लोगों के बीच में बैठ के और आप एक दूसरे की बातें करते हैं, तो यू आर पुटिंग आउट नेगेटिविटी इनटू द वर्ल्ड, एंड ही कॉल्स दैट ब्लैक मैजिक. It's you're losing the impeccability of
of your word when you do that. And that's why we say words are very important, Simon. That's the reason why the first agreement itself says that words are so important, and that it's going to make that foundation of your life or your surroundings. क्योंकि अगर आप गॉसिप करते रहोगे तो आई थिंक जो भी आप नेचर को दे रहे हो वर्ड्स के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा, वो दोबारा आपको ही आएगा. एंड समथिंग आई हैव लर्नड, ऑफ कोर्स हम दोनों बात करते थे कि वी आर नॉट परफेक्ट पर्सन, वी आर वेरी इम्परफेक्ट, एंड वी लर्न एवरी डे from every part of the life that how we can make ourselves better before even thinking of making somebody else better. और खुद को जब I think मुझे अभी I'm fortunate to say now that I have learned so many things in my life as well, which actually every day small steps I put, which helps me to feel that okay कि मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे खुशी मिलती है. फिर दूसरों को खुशी तो मैं बाद में दूंगी, पहले तो मैं अपने को खुश रखूँ ना. जब तक आप खुद को खुश नहीं रखेंगे आप दूसरे को खुश रख ही नहीं सकते. देखिए जैसे कि हम कहते हैं घड़ा आधा है भरा है या पूरा है, कुछ लोग देते हैं कि आधा भरा है, कुछ लोग देते हैं पूरा भरा है, कुछ लोग देते हैं एटलीस्ट घड़ा तो है. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन एंड योर रिफ्लेक्शन ऑन दैट परसेप्शन मेक्स अ big huge difference in how you project your life to others in front of. तो पहले अपने आप के अपने गिरेबा में जाके देखिए कि आप क्या चीजें जिसमें आप वो जो मिसिंग लिंक्स है जो you can fill those gaps by doing small things in your life. You don't have to do something big major, कोई skyrocketing काम नहीं करना, लेकिन छोटी छोटी चीजें आप fill कर सकते हो, puzzles को complete कर सकते हो. I feel that big things are irrelevant if you don't focus on the small things of life. और वो छोटी चीजें जो हैं कि the small things that we feel gratitude for, the small things that you know, मैं अपनी बेटियों से बात कर रही थी और मैं उनको literally बोल रही थी कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जिंदगी की. You know, you wake up and you are just grateful for the fact that you were fortunate enough to wake up. You are sitting and you see the sun come out and you are like, okay, I'm grateful that, you know, suraj nikla hai, it's not cloudy, because, you know, for me meri energy hai wo sunlight ke sath connected hai. So these are little things to feel grateful for, to be that will consume you. वो जो छोटी छोटी चीजें हम अपनी जिंदगी में भर देंगे तो वो छोटी चीजें जो हैं वो पेबल्स हैं, एंड वो पेबल्स में हम जब भरते जाएंगे तो इट्स लाइक उन पेबल्स से आप you will reach the top, because वो घड़ा भर जाएगा. जब बड़ी चीजों का आप इंतजार करते रहते हैं कि ये होगा तो मैं वो करूं, वो होगा तो मैं ये करूं, वो चीजें नहीं होती तो आप जिंदगी में आप बैठ के इंतजार ही करते रहते हैं. You know, so integrity of your words, like you said, वो अल्फाज जो हमारे खुद के अंदर भी हैं, those words are so meaningful. अगर हमारे अंदर ही हैं, actually this is something I discovered कि हमारे खुद के अंदर है, सबके अंदर है, हम उसको डिस्कवर नहीं करते बस. See, the thing is कि अगर हमारे दिमाग के अंदर है कि the word is happiness, तो ऑटोमेटिकली हम हर चीज के अंदर खुशी ढूंढना शुरू कर देंगे, पॉजिटिविटी. अगर हर वक्त हम सुबह उठते के साथ ही हम ये शुरू हो जाएंगे मुझे इतना बोझ है, मुझे आज ये करना है, मुझे आज वो करना है, तो then that's basically how your day is going to progress. बिल्कुल. आपके आसपास अगर आपके आसपास की जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जिनको पता कि जिनसे आप जो है अवॉइड करना चाहिए, जिनके वाइब्स आपको अच्छे नहीं लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे जिसको आप मतलब यू पुट एन एफर्ट टू मीट देम क्योंकि उनसे मिलना, उनसे बात करना अच्छा लगता है. आई एम श्योर आपकी ज़हन में भी कुछ लोग आते होंगे जो आपको लगता है कि हाँ इनसे मुझे नहीं मिलना क्योंकि ये जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से उसका ऑरा है बहुत नेगेटिव है. तो डेफिनेटली ये सब होता है कि वर्ड्स का जो असर बहुत होता है, एंड एक्शंस आर अगेन in connection with our vibes, with our thoughts. So इसलिए हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को जो हमें सुन रहे हैं, अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पे जो है 2148173333, और आप गाने भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, किसी को डेडिकेट भी कर सकते हो. Absolutely, and I feel कि आप उन्हीं लोगों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं जो आप खुद होते हैं. तो अगर आपके अंदर खुशी है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, तो आप अपनी जिंदगी में उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे. अगर आप हर वक्त कुड़ते रहते हैं और आप हर वक्त यू नो चिक चिक करते, चिड़चिड़ करते, बेसिकली यू आर अ टॉक्सिक ह्यूमन बीइंग, एंड व्हेन यू आर अ टॉक्सिक ह्यूमन बीइंग अनफॉर्चुनेटली ऑल यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इज नेगेटिव पीपल जस्ट लाइक योरसेल्फ. Neither you're happy nor you're making the environment happy. So इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले गाने के ऊपर. तेरा हुआ खूबसूरत गाना है, तो चले तब तक हम आपकी कॉल्स लेते हैं. So, how's everyone doing? Let's see, we have a lot of people here.
Tayyab, Bashir Ahmed Ranja, thank you for being here. Ajay, thank you for watching us. Amir, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं. आशिक फराज, Tayyab, Noor, thank you for being a part of our show, our journey. Rashmi, Mohammed Zulfikar, Mahir Javeri. Hey Nitesh, how are you? Saqib, Ameya, hope you're doing well. Thank you for being here. Thank you for your kind words, Ameya. And Usman, Dr. Akil, thank you for watching. Malik Shahid, Latif. Hey Sajid, kaise ho aap? Hey Alia, Mohammed, Ghazi Ahmed, Aftab, Mugheri. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का for being a part of my journey. And आप में से कोई भी अगर ब्रेक के दौरान या अगर हमारे साथ राइट हियर on the screen जिस पे आप watch कर रहे हैं, if you guys want to be live, join me on Facebook Live. Do join and send me, just you're able to after would you like to be in our video? I've received a message. Let's see. कितना time है कल्पना? Okay, so after, if you actually want to be in our video, give me 8 minutes. हम लोग 8 मिनट के अंदर ब्रेक के ऊपर जाएंगे. तो जब ब्रेक पे जाते हैं तो I can take you live. Aftab, are you interested in coming on the camera? Let me know because आपकी request आई है to join. I can bring you on in a few minutes अगर आप आना चाहते हैं. तो अहमद अली, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for being here. So आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया to support us and to help build us. Mira, okay, I see Aftab, you want to join us, so I will bring you on in. You want to come on in? He's going to call us today? No, I'm going to bring Aftab on this screen. Oh. Right here. All right. In 6 minutes, Aftab. 2:30 हमारा central time होगा. Hey Sohail, how are you doing? बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. हमें actually 1 साल हो गया है ये रेडियो के ऊपर शो करते हुए. It's a 104.1 and 700 AM Radio Caravan. We come every Thursday from 1 to 3. Our podcast, I hope if you're a part of my journey, podcast you've been listening to for 2 years that I've been doing. So we're going live. And that was the song taken from Love Yatri. खूबसूरत गाना है. और चलिए देखिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर साइमा. So we've been talking about the 4 agreements, and ये इसका final 4th agreement है जिसके अंदर it just talks about doing your best in any circumstances in your life. You know what? Just do your best. It doesn't matter चाहे आप बीमार हो, थक गए हो, आप जिस situation में हो, just do your best. Do not judge yourself. And if you don't judge yourself, then there's no way you're going to suffer from guilt, blame, self-punishment. Because by always doing your best, you will break a big spell in your life that you yourself have been under. And you don't even realize कि आप उस spell के अंदर हैं. Because when you stop judging yourself, you're going to treat yourself as if you are worthy of the best in life. And when you feel that you are worthy of the best in life, then life will only send the best your way. और बहुत खूबसूरत आपने एनालॉजी दी थी गाने से पहले की, जिस तरह से एक एक पेबल आप घर में भरते हो. और हमें कहानी पता है, कभी की कहानी हम सबको पता है कि किस तरह से एक एक पत्थर लेके आके मतलब ही इज गोइंग टू जस्ट ब्रिंग द वाटर अप. और हम सबको जानते भी हैं कि एक बूंद से पानी एक एक बूंद से जो है सागर भरता है बाल्टी भरती. तो इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही जो है हम बड़ी बड़ी मंजिल पा सकते हैं. और बड़ी मंजिल के लिए कोई भी काम जो है किसी को दिखाने के लिए मत कीजिए. एंड दैट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस. क्योंकि कोई बात अगर हम कह देंगे आप सुन लो, ऐसे नहीं कि अचानक आपको आ जाएगा और यू गोइंग टू हैव मिरेकल्स ओवरनाइट. बट इट नीड्स अ प्रैक्टिस. इट सर्टेनली नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस. एंड
और इस प्रैक्टिस से ही जो है हम जो है मंजिल पा सकते हैं, आगे जा सकते हैं. That's very important, and like Trima said, do your best in whatever situation it is. No more, no less. Just do your best. क्योंकि होता है कैसा ना, जब हम ज़्यादा करते हैं ना, हम बहुत कुछ ज़्यादा ही भागदौड़ करते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं और लगता है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा. एंड फिर कुछ लोग हैं जो है कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं, मैंने कहा ठीक है हो गया, एंड देन दे आल्सो वांट रिजल्ट्स. सो एवरीबॉडी वांट्स द रिजल्ट्स, बट दे डोंट वांट टू सी कि Life is not results life's based. not about, yeah, it's not about the destination, it's about the journey. बिल्कुल. So just do your best in that journey, and that certainly needs a lot of practice, a lot of effort. So that's something, it only can start with one step, that can be today. Bilkul. And there's a really cool story. And the story is that there was once a man who wanted to transcend his suffering. तो वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल में गए टू फाइंड अ मास्टर जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल में जो उनको हेल्प कर सकें. सो वो मास्टर के पास गए और उन्होंने पूछा मास्टर से कि अगर मैं बहुत इबादत करूं, अगर मैं बहुत मेडिटेट करूं दिन के अंदर, जैसे मैं 4 घंटे के लिए बैठ के मेडिटेट करूं, तो मुझे कितना वक्त लगेगा कि मैं ट्रांसेंड कर सकूं, मैं खुदा के पास पहुंच सकूं. एंड तो मास्टर ने उनको देखा एंड कहा कि इफ यू मेडिटेट 4 hours a day, तो हो सकता है कि आपको 10 साल लगे ट्रांसेंड करने में. बट थिंकिंग दैट ही कुड डू बेटर, द मैन सेड ओके व्हाट इफ मैं 8 घंटे के लिए इबादत करूं रोज. सो द मास्टर ने उसको देखा और मास्टर ने उसको बोला कि अगर आप दिन में 8 घंटे की इबादत करेंगे तो शायद आपको 20 साल लगें ट्रांसेंड करने में, खुदा के पास पहुंचने में. So he said, why will it take me longer if I meditate more? So the master replied that you're not here to sacrifice your joy or your life. You're here to live, to be happy, to be loved. If you do your best in 2 hours of meditation, then just spend 8 और बट 2 घंटे के बजाय आप 8 घंटे अगर गुजारेंगे, यू जस्ट गोइंग टू ग्रो टायर्ड, यू गोइंग टू मिस द पॉइंट एंड यू वांट एंजॉय दिस लाइफ, ये खूबसूरत जिंदगी जो कि खुदा ने हमें दी है. सो डू योर बेस्ट. परहैप्स यू विल लर्न दैट नो मैटर हाउ लॉन्ग यू मेडिटेट, you can live and love and be happy in this beautiful life that we are a part of. Very beautiful. And इसके साथ बताना चाहेंगे कि join Pallavi Aluwalia from Aluwalia Law Offices every Wednesday from 5:30 p.m. to 6 p.m. on the airwaves of Radio Caravan. You can call in with your questions at 214-817-3333. That's studio's number. Team ALO provides exceptional services in the areas of employment and family-based immigration, family law, corporate law, and civil matters. Call now at 972-361-0606 or log on to yourdesylawyer.com for more details. और अब हम जानने वाले फिर से कमर्शियल ब्रेक की और साइमा, और आपने जो खूबसूरत बात कही है कि आप कितनी देर मेडिटेट करेंगे, कितनी देर भगवान की इबादत करोगे तो कब हम पहुंच जाएंगे. लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अक्सर लोग जो है वो घंटे घंटे बैठते हैं, पूजा करते हैं और पीछे जो है कुछ काम चल रहा है तो उनको डांटते हैं कि चुप करो मैं पूजा कर रही हूँ, चुप करो मैं पूजा कर रही हूँ. नो, इट्स अबाउट यू नीड टू जस्ट ब्रिंग एवरीबॉडी, एम्ब्रेस दैट. एंड एक चीज को मेडिटेट करने के लिए दूसरी चीज को आपको फ्रस्ट्रेट दिखाने की जरूरत नहीं है. एंड किसी को पाने के लिए मत कीजिए, अपनी खुशी के लिए कीजिए. कि अगर आप 4 घंटे करें, 8 घंटे करें, 4 मिनट करें और आपको कुछ मिल जाएगा. It's not about that. It's about whatever you're doing, you need to just feel involved in it and enjoy what you're going to do. Absolutely. And I feel I am a big believer that God lies within you. Absolutely. खुदा तो आपके अंदर मौजूद है, आप दर बदर उसको ढूंढ रहे हैं, मगर he is right there within और you. इसके साथ चलते छोटे कमर्शियल ब्रेक की और ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपसे और ढेर सारी बात करेंगे और गाने भी सुनाएंगे. 214-817-333 है हमारे स्टूडियो का नंबर. Okay. So I took that sip and that Thank you. sip went Thank wrong. you, Arvind. Thank you, Anu. Thank you for watching. And yes, we are today talking about the 4 Agreements, a book written by Don Miguel Ruiz. And today is the 4th edition. 4th agreement that we're talking about. Always do your best, and action, of course, is necessary. But regardless of the effort, always do your best. No more, no less. Okay. So, Aftab, you ready? Okay. So we're waiting for you. Come on. किधर हैं आप आफ्ताब? We've sent you a request. So अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आफ्ताब आप? So how are you doing?
आई एम गुड। आप सुनाइए कैसे हैं? आपको रमजान की मुबारक। शुक्रिया। और आपको मैं शो देख रहा था, बहुत जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बताएं आप आपका क्या ख्याल है? व्हाट डू यू फील कि अपनी जिंदगी बेस्ट लाइफ को जीने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, मेरा तो कहना यह है कि फार्मूला यही होना चाहिए, इंसानियत का होना चाहिए। और जब इंसान अपने आप को पहचानता है तो अपने रब को, भगवान को, ईश्वर को, खुदा को, जो भी कहे उसको पहचान लेता है। जब इंसान अपने आप को ही नहीं पहचानता तो फिर जानवर और हम में कोई फर्क नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जिस धरती से मेरा ताल्लुक है, लाल शहबाज कलंदर की और शाह लतीफ भटाई की और बाबा गुरु नानक की, सच्चल सरमस्त की और कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो जिन्होंने इंसानियत की बात की है और उन्होंने अपने आप को पहचानने की बात की है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है पूरी दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए। उन्होंने यूनाइटेड होने की बात की है। तो जब बाबा गुरु नानक ने, सच्चल सरमस्त ने, शाह लतीफ भटाई ने, करंदर लाल शहबाज ने जब ये मैसेज दिया कि अपने आप को, अंदर को पहचानो, जब अंदर को नहीं पहचाना तो आप किसी को क्या पहचानो? तो ये लोग समझते क्यों नहीं है? लोग दर बदर ढूंढ रहे होते हैं, इतनी लड़ने मरने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, हर वक्त बैठे हुए दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे होते हैं। दे डोंट रियलाइज कि जब आप एक उंगली किसी दूसरे पे उठाते हैं तो बाकी उंगलियों का रुख आपके खुद की तरफ होता है। तो लोग ये रियलाइज नहीं करते कि दूसरों के ऊपर बैठ के दूसरों में कीड़े निकाल रहे हो बैठ के, मगर खुद के अंदर जो इतनी सारी खामियां हैं उनको कब सुधारोगे? इसीलिए तो हम एक दूसरे को इंसान कहते हैं। Well, anything else? Thank you. आपने बड़ी अच्छी बात की। मैंने आपको ये कहना था, इसीलिए तो हम एक दूसरे को इंसान कहते हैं। मगर हमारे किसी शायर ने बड़ा क्या खूब कहा है, न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है, ये रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। बिल्कुल, क्योंकि मामला कोई और है। बिल्कुल, क्योंकि अगर लोग ये समझ जाएं कि ये दुनिया में 7 बिलियन प्लस की जो पॉपुलेशन है, उधर हर इंसान जो है वो एक ही खुदा का बनाया हुआ है, तो कितने मसले सॉल्व हो जाएं। और आप बिलीव करें कि हम जो है टेंपल में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, मां बारगाह में भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे कहीं भी हो। तो हम तो इस चीज पे बिलीव करते हैं कि जो जहाँ पे इबादत कर रहा है, सजदा कर रहा है, उसकी वहां पे कबूलियत है। अगर उसका दिल मानता है तो उसको मानने दे। और मैं जिस नबी का मानने वाला हूँ, उसने कभी भी इस्लाम और कभी भी अपना मजहब तलवार की नोक पे किसी पे मुसलत नहीं किया था। बट हम बनाए हुए, अगर हमारा यकीन ये है कि खुदा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिलता नहीं है, तो then why do we not respect each other as human beings? तो आप कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं? मैं अभी इस वक्त तो कराची में बैठा हुआ हूँ और कराची में आपका शो देख रहा था। वंडरफुल। बाय द वे, मैं बीइंग द एंकर पर्सन, मैं खुद मीडिया से वाबस्ता हूँ। और अभी हमारे यहाँ एक बड़ी खुशखबरी आई थी पाकिस्तान के, हमारा आईनी बुरान जो है वो आज खत्म हुआ है। तो बस ट्रांसमिशन खत्म करके लाइव अभी थोड़ी मैं चीज देख रहा था, तो आपका शो सामने नजर आया, तो मैंने कहा चले आपसे बात हो जाए तो अच्छी बात। Wonderful. So thank you for being here. I'm going to move you because we're getting ready to go live on the radio again. बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। So that was cool. आप join करना चाहते हैं तो send me a request. You want to go after this? Yeah. So we're going live back on the radio. Hello everyone, कैसे हैं आप? So आप सुन रहे हैं साइमा और कल्पना को, and you're listening to us on Radio Caravan, your favorite radio station. आप हमें सुन सकते हैं online as well by going on to join the Caravan. और अगर आप Facebook के ऊपर मेरे या कल्पना के फेसबुक पेज के ऊपर जाएं तो वी आर स्ट्रीमिंग लाइव ओवर देयर, आप हमें लाइव भी वॉच कर सकते हैं। और मैं लिंक्डइन और यूट्यूब के ऊपर भी लाइव हूँ, so you can watch us on YouTube live every week. So
we are talking about the four agreements. We are talking about doing our best, no matter जिंदगी के हाई मोमेंट्स हो, जिंदगी के लो मोमेंट्स हो, हर मोमेंट के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को परफेक्शन के साथ करें. कभी हमारी परफेक्शन का लेवल बहुत ऊंचा होगा, कभी हमारी परफेक्शन का लेवल बहुत नीचा होगा, कभी हम, depending on what we are experiencing in life. And according to Don Miguel, that is perfectly fine. आप, bottom line is कि वो चाहे high moments हो, वो चाहे low moments हो, always just give your best. Doing your best, you're going to live your life in the best possible, best intentional way. You're going to be productive. You're going to be good to yourself because you will be giving yourself to your family, your community, your everything. But it is the action that is going to make you feel intensely happy. And exactly, that's the exact word is action. So when we say कि do your best, it actually certainly needs an effort and action. And एक और बात है जो बहुत ही crucial है साइमन जानने की बात है कि जो लोग ये समझते हैं कि कहना आसान है और निभाना करना मुश्किल है, और ये इस वजह से ये जो लाइन है, जो थिन लाइन है, जो लकीर के बाहर ये कि as long as you don't control on your mind, this is absolutely easy to say than do it. And हमारे एक लिसनर्स ने भी बताया था कि वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट? तो इसके बारे में बताना चाहूँगी कि बहुत अच्छी एक चीज़ जो मैंने जानी थी हाल ही में कि हम लोग वी आर विद द एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, राइट? वी केम फ्रॉम एनिमल, वी ऑल नो दैट वी आर एवोल्यूशन फ्रॉम एप्स. तो यानी कि हम पशु, हिंदी में कहते हैं कि पशु यानी कि जानवर. तो हम एक्चुअली पशु का ही एक रूप है, लेकिन जब हम उस पर काबू पा लेते हैं या हमारे माइंड पे काबू पाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा माइंड. जब हम माइंड पे काबू पा लेते हैं कि जो कुछ भी हमारे माइंड में मुझे ये करना है, वो करना है, वेट लूज करना है, या फिर जॉब जाना है, लोगों की बातों पे मुझे बुरा नहीं मानना है, ये जो कुछ भी चीजें आपके अंदर चल रही हैं, ये सारे आपके दिमाग में है, पर आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने अभी तक अपने माइंड पे काबू नहीं पाए. और जब हम काबू पा लेते हैं, इट्स कॉल्ड एज पशुपति, यानी कि दैट वी जस्ट गेट कंट्रोल ओवर आवर माइंड. सो दैट्स मीन पशुपति. सो उन्होंने जब ये बात कही तो मुझे ये ध्यान आया कि दिस समथिंग दैट आई हैव लर्नड आल्सो कि जब तक हम नहीं जान पाते, बहुत आसान है कहना कि भाई कहना आसान है, करना मुश्किल है. बिकॉज अगर हैव यू एवर हर्ड अबाउट समबडी सेइंग कि if I can do it, anybody can do it. But I would say on the other side, no. If I can do it doesn't mean that you're going to do it. If I can do it, you can do it only when you put an effort towards it. So that's effort is very important. That's when you will feel like doing your best in any situation that's given to you. I feel कि जिंदगी के अंदर on a daily basis, just do whatever you can do in whatever capacity. Just keep flowing. कल्पना, मैं अपनी ज़िंदगी के उस स्टेज के ऊपर हूँ जिधर मुझे ये रियलाइजेशन है कि आई हैव नो कंट्रोल ओवर एनीथिंग. आई डोंट नो कि कल का वक्त क्या लेके आएगा. ब्लिंक ऑफ एन आई, पल भर के अंदर जिंदगी पूरी चेंज हो जाती है. अभी बैठ के उन चीज़ों के प्लान्स बनाना जिनका आपको पता भी नहीं है कि वो प्लान्स मटेरियलाइज करेंगे भी या नहीं, आप उन रिश्तों में होंगे या नहीं, आपकी जिंदगी होगी या नहीं, कौन से मोड़ के ऊपर कौन सी चीज आएगी जिससे आपकी जिंदगी का रुख ही बदल जाएगा. तो जब आप कल के बारे में सोचते हैं ना, तो आपको एंजाइटी होती है, आप फिक्रे करते हैं, आप प्लान्स बनाते हैं, फिर वो प्लान्स पूरे नहीं होते, तो देन यू गेट डीरेल्ड बिकॉज आपको स्ट्रेस होता है, आपको टेंशन होती है कि वो प्लान्स आपके नहीं हुए. तो 80% ऑफ द थिंग्स जिनके ऊपर हम फिक्रे बैठ के अभी कर रहे हैं, you know what, those 80% of the things are not even going to end up happening. So why not live in the moment? Live in the moment and live in the present. That's very important because those who live in the past are normally are depressed people. Those who live in the future are people who have anxiety. But those who live in the current situation are the people who have peace and happiness within. So live in that moment. जब मैं खुद को देखती हूँ तो मुझे ऐसा फील करता है कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर एक दरिया की तरह हूँ, और उस दरिया के अंदर I'm just flowing. और वो दरिया मुझे किस तरफ बहा के लेके जाए मुझे नहीं पता, but I'm flowing. Yes, and that's what is more in rolling stone is very important than just a stone which is stuck there and then attracting all the dust around it. So वो ज़्यादा important है. और ये मानिए कि देखो जिंदगी में ऐसे नहीं कि आज हमने ये बात की कि
we have practiced these things. और ऐसा नहीं कि मैं ये practice करके मैंने कुछ हासिल कर लिया. No, I'm still in the journey. I'm still probably going to make a mistake. लेकिन हर दिन मैं सीखती हूँ. And I can certainly say assertively that I'm happy for whatever I have right now. और कल क्या मुझे दिखाने वाला है, we don't know. Nobody knows actually. We don't even want to know what's going to happen. लेकिन does not mean you don't make plans. Plans may take a shape and may not take a shape, but do not feel anxiety and don't even sit there by getting in a fit of not even starting because I don't know what's going to be the results. No, just keep doing your best. That's what is the core meaning of this fourth agreement. And I also feel कि एक ये जो word है, the word mistakes, failure, ये वो negative words हैं जिनको हम they just have such a negative connotation behind it. मगर ये अल्फाज जो हैं इनका सिर्फ इतना meaning है कि जिंदगी में हमने कुछ try किया और उसका वो outcome नहीं निकला जो outcome we were expecting. So I feel कि that's an indication that life wants us to pivot. Life wants us to change our course of direction. And I think कि it's okay, जिंदगी में कभी कुछ चीज़ों में आपको वो आउटकम मिलेगी जो आप चाहते हैं और कभी आपको वो आउटकम नहीं मिलेगी. बट जब आपको नहीं वो आउटकम मिलेगी इट मीन्स कि लाइफ आपको किसी दूसरी डायरेक्शन में लेके आ रहा है. बट जब वो फेलियर्स आती हैं, आई थिंक इवन अपब्रिंगिंग के अंदर मोस्ट पेरेंट्स, विच इज समथिंग आई एम सो फॉर्चुनेट माई पेरेंट्स डिड नॉट do with me, but I was always enough for my parents. But I think most parents, उनकी expectations इतनी high होती हैं. आप हर वक्त grades देख रहे होते हैं बच्चों के. जब बच्चों के grades अच्छे नहीं आते हैं, आप बच्चों को you chastise them कि तुम्हारे grades अच्छे नहीं आए या B आ गया है. I mean, this is ingrained in you from the time you're born कि जब तक वो exemplary behavior नहीं होगी, जब तक वो perfect आपका presence नहीं होगा, जब तक आप हर चीज़ right नहीं करेंगे community standards, society के standard के हिसाब से, that there's something wrong with you, and that is not true because everyone is different and everyone is meant to be different. We're not supposed to just conform to all these standards which are set by society. There's absolutely a vast amount of disparity and exists around us, and that should be, because if everybody starts doing the same thing, then what is the fun of it? It has to be something different, and we learn from those differences in the life, and it has to be diversity in every part of the life. But you need to embrace them. That's more important. You cannot keep sitting and judging if that doesn't fit your lifestyle and you say, oh, they are something like that, so this is this. No, it doesn't fit your lifestyle. That's okay. It's their lifestyle. It's not your lifestyle. So do not judge based on that. And trust me, all these things makes a practice. And that's why keep doing your best and put an effort every day. Constant effort is very important. And I also would like to happy to announce that I'm now a certified life coach, and I've learned so much through that, Saima. It's about life is like a puzzle, right? हमारे जिंदगी में कुछ लोगों के pieces miss हो जाती है, and it's about how to connect those pieces. That's what, and to make a big picture in your life, and that's what everybody's missing. Some of the other pieces and puzzle pieces in the life. और एक दो miss होती है तो कोई बात नहीं, सबकी जिंदगी में होती है, सबका कोई perfect picture आने की जरूरत नहीं है, लेकिन किस तरह से आप उसे fill कर सकते हो, वो है journey of life, and that's what everybody needs to work on. And with that, we want to move on to the next song. And before the song, I would like to say that are you craving for having a financial freedom? Because everybody wants a financial freedom, of course. Get your financial freedom by enrolling into Nanban Foundation. They are offering a free training program, and Nanban Foundation believes that a friend in need is a friend indeed. Learn their flagship GK investment strategies level 1 and level 2 via free webinar training in May over 2 weekends. That's May 21st and 22nd and May 28th and 29th, starting from 11 a.m. Central Eastern Time. And each session will be for 3 hours. For more details and registration, log on to nanbanfoundation.org. Yes, nanbanfoundation.org, and step into the world of true friendship at Nanban Foundation. और अब चलते हैं हमारे अगले गाने की और ये गाना लिया गया है मूवी 10वीं से, और ये मैंने हाल ही में देखा है. अच्छी मूवी है, अगर आप देखना चाहें तो. अभिषेक बच्चन एंड यामी गुप्ता के ऊपर है. So back to my online audience. We are very hard on ourselves.
हमारी खुद से आई थिंक ये अपब्रिंगिंग में ही होता है कि एज वी आर ग्रोइंग अप so many expectations जो हमारे अंदर पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स कल्पना आई फील जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं दैट इज थिंकिंग के हमारे जो बच्चे हैं ना वो हमारी अधूरे ख्वाबों को पूरा करेंगे, विच इज आई थिंक स्पेशली देसी माइंडसेट के अंदर ये पेरेंट्स अपनी कमर तोड़ देंगे अपनी हर चीज के आप हमारे बच्चे वो कर दिखाएं जो हमने नहीं किया. But that is such a wrong expectation to have because हर इंसान वो चाहे मैं हूँ मेरे बच्चे हों we have all come into this world to live our individual unique lives. We have not come into this world कि हम हमारे पेरेंट्स के या हम किसी की दूसरे के ख्वाब पूरे करें. हम we are supposed to fulfill our own dreams in this life. That's a very good thing, and that's something the connotation where every parent also has to come out of it. And it probably is still going to take time, in spite of the technology has skyrocketed, and everybody can reach. The luxuries are just a hand reach, but even regardless of that, our emotions are still stuck in, I think, the past life. Some of them, not everybody. And like Saima said, that yes, many parents think that if we didn't fulfill, especially the South Asian parents, if we did not fulfill something, our children are going to do that. You can certainly encourage them but if they are not interested, you just pull them out. Guidance, as parents you're supposed to guide your children. Yes. But you're not supposed to force your children कि तुमको ये ही करना है या तुमको वो ही करना है. So thank you everyone. एहतशाम बहुत बहुत शुक्रिया आपके kind words का. Firoz, thank you for watching. Sneha, thank you for being a part of the show. Farzana, Uzma, thank you so much. Upinder, Mandy, thank you so much for watching. Sukant, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for being here. Amar, बहुत बहुत शुक्रिया. With that, ये था गाना लिया गया मूवी 10वीं से. ये I think अभिषेक बच्चन एंड यामी गौतम है इसमें. But anyway, हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, क्योंकि साइमन जब अपनी बात की थी कि जो लोग हैं स्पेशली साउथ एशियन पेरेंट्स, ये बहुत अच्छी बातें की गई हैं, सोचने वाली बात है काफ़ी लोगों के लिए. We not saying कि everybody does it, लेकिन many of them have this kind of thoughts in their mind कि अगर हमने कुछ फुलफिल नहीं किया जिंदगी में, जो हासिल नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में, तो हमारे बच्चे वो आपके अधूरे ख्वाब पूरे करें. और उसके लिए अपने बच्चों को जरूर गाइडेंस दीजिए और उन्हें करे दीजिए. लेकिन अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो बजाय उसके कि उसमें रखे और उन्हें गिल्ट ट्रिप करवाएं, उन्हें फोर्स करें, उन्हें प्रेशराइज करें, एंड देन इससे उनका भी जो है सेल्फ एस्टीम कम होता जाए. Just pull them out of that, because you need to just pivot that, like we said, that you need to pivot in our life, ourselves as well, and even our children, because we can only give them guidance, but ultimately it's their life and their decisions and their destination. We cannot hold on to them and they say this is what you have to do, because we are here to take care of you in no matter what. Because जब हम बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी expectations डालते हैं तो we are putting a lot of pressure on their mental health issues. Absolutely. And ये वैसे भी this is the month for mental health awareness. Mental health, so हमारा mind, body, soul, everything needs to be in sync. और सबकी ट्यूनिंग की बहुत ज़रूरत होती है. तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, माइंड, बॉडी, सोल, जब ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ ऑफ बीट जाती है तो हमारा जो फंक्शनिंग करने का जो निज़ाम है वो ऑफ बीट हो जाता है. एंड there is nothing wrong with going to psychiatrist for using medication. There are so many things which are out there. हम लोग बड़े हुए, especially in the Southeast, Asian community, there's so much stigma against mental health. And that stigma is so wrong. Which I therapists हो, counselors हो, जैसे कल्पना, congratulations on becoming a life coach. So वो life coaches हो. I believe कि हर इंसान की एक डिफरेंट एक्सपर्टीज है और वो एक्सपर्टीज जो है वो यूटिलाइज होती है because we are experts in our fields and we use experts to guide us, to help us make better decisions. And whether it's psychiatrists, it's life coaches, it's counselors, therapists, these things need to be utilized. हमारे बच्चों को ज़रूरत अगर पड़े, they should be taken for therapy. Therapist और कुछ नहीं करता. It's someone who, without judgment, it helps you
just channels your emotions and helps you understand that it is okay for you to feel what you're feeling. Right. मगर जो negative emotions हमारे अंदर जाते हैं, they need a place to come out as well. Absolutely true. और पता है इसका मैं एक छोटा सा analogy देना चाहूँगी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अक्सर बोलती रहती हूँ लोगों को, अपने जान बच्चे लोगों को, कि whether you go to a counselor, therapist or life coach, and I just recently came to know what is the difference between all these three, and that's a different topic to talk. लेकिन कुछ लोग घर वालों से बात नहीं कर पाते and they go and just consult psychiatrists or counselors, therapists, life coaches. यानी कि वो दिल की बात जो कहना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे घर वाले समझते नहीं है, समझना चाहते, काट देते. All they do is these people who are professional in their field. जैसे कि अभी आपने अगर कोई यान लिया है, कोई अगर आप स्वेटर बना रहे हो, आपके पास एक धागा है, ओके, वुलन धागा, और ये पूरा जो अनस्ट्रैंगल हो चुका है, टैंगल है, और तो all they do is they just going to wrap it in a proper way. यानी कि आपकी ही चीज़ों के अंदर आपसे ही जवाब पूछ के, आपसे ही इंट्रोस्पेक्ट करवा के वो धागे को जो है उनमें से जो गांठे हैं वो निकाल देते हैं. यानी कि वो एक धागा जो है वो सॉफ्ट एंड पीस लगता है जो धागा बन रहा होता है. तो इट्स ऑल अबाउट दैट. यू जस्ट लाइक बेखौफ आप उनसे बात कर सकते हो, जो बात आपके घर वालों से नहीं कर सकते, क्योंकि या तो वो काटते हैं या आपको लगता है कि मैंने बात वो समझते नहीं है. सो दीज आर द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम. और कभी कभार ये भी होता है साइमा कि वहां पर भी जाने के बाद लोग सेटिस्फाई नहीं होते, एंड दे कीप चेंजिंग देयर काउंसलर्स कि ये हमारी बातें समझ रही, वो हमारी बातें समझ रही, बिकॉज दे जस्ट प्रोवाइड यू टूल्स टू for make you to understand where is the missing puzzle, where you can from within you can find this puzzle and just put it and fill the gap. So कल्पना, इस चीज़ के अंदर my feedback जो है वो ये है कि हर एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज सेम नहीं होती. जैसे मैं रियल्टर हूँ, मैं रियल एस्टेट करती हूँ, मुझे 17 साल हो गए रियल एस्टेट करते हुए. तो हर इंसान मुख्तलिफ है. बहुत रियल्टर्स हैं, हर किसी की एक्सपर्टीज अलग होगी, हर किसी का तजुर्बा अलग होगा, तो हर इंसान सेम नहीं है, राइट? सो आई थिंक काउंसलर्स के अंदर भी, थेरेपिस्ट के अंदर भी, साइकाइट्रिस्ट में भी, साइकोलॉजिस्ट में बहुत ज़रूरी है. समटाइम्स दैट प्रोसेस इज इन्वॉल्व वेयर you might have to go through a few different counselors to find someone you resonate with. I will tell you something, कल्पना, कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है, आप क्यों थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू फील कि जब आप अपने दिल की बातें और जब आप अपनी खामियां, अपनी गलतियां, जब ये वो अपना जो ब्रोकननेस है विद इन अस, जब आप उन चीज़ों को इन प्रोफेशनल्स के साथ जब आप शेयर करें, तो you want to feel that they are not judging you, and instead they are just sitting there and telling you, hey, I understand. तो जो काउंसलर्स ये नहीं करते हैं, एंड जब बच्चे या अडल्ट जब हम इनके पास जाते हैं और हम ये फील करें कि you know what, that person is sitting there and judging us because we are sitting and telling them about our deepest secrets, then that's a problem. And that's why we said unwrapping the tangled wire yarn in their life. And again, having said that, and with respect that it's not about the clients why they change it. It's about they did not help them find that missing puzzle. That's why they changed these counselors, because it's not about nothing wrong. Because you're just wanting your mental peace. You just wanted to consult and say, open up yourself. And if that therapist or that counselor didn't help you find that missing piece within you, obviously you have a right to go change, because that's what you're looking for. Right? वो भी एक heart to heart connection होना चाहिए. Connection is more. जिंदगी में हर connection has to be a heart to heart connection. Absolutely. And with that, we move on to the next song. And before the song, I want to say that we want to welcome Mani. We're on the airwaves of Radio Caravan celebration, where for the whole family, for all upcoming festivities, let Mani wear make you look good. And this is located at Irving on the east service of 635 and Beltline at Regent Road. And ये जो गाना है, ये खूबसूरत गाना है, भाग मिलकर भागम हाथ से लिया गया है. चलिए हम सब मिलकर सुनते हैं. So coming back to our online audience, तो कैसे हैं सब लोग? Rashmi, thank you so much for joining us. Bashir, बहुत बहुत शुक्रिया. Noreen, how are you doing? A long time. Hope you are well. Firoz, thank you for watching. So I think I had a request
Farzana, are you wanting to join us? मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है. You will be live on the screen if that was intentionally done. But yes, अगर आप में से कोई भी अगर मेरे साथ आके अपनी फीडबैक देना चाहे, हमारे साथ कोई भी बात शेयर करना चाहे, you're most welcome to come and join. And Farzana, I don't know if that's what you meant to do, but बट अगर आप आना चाहती हैं, हमें लाइव ज्वाइन करना चाहती हैं, तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम. तो एनीवेज हम लोग हर थर्सडे को आते हैं. By profession, I am a real estate agent here in the Dallas area. मैं residential real estate भी करती हूँ, commercial real estate भी करती हूँ. I do have a hotel which is for sale. अगर आप होटल ढूंढ रहे हैं, तो there is a hotel. It is a closed down hotel. Dallas Fort Worth डाउनटाउन से कोई 1 घंटे के फासले के ऊपर है. अगर आप किसी को जानते हैं जिसका वो शट डाउन हुआ हुआ है, बट इट इज़ अप्रूव्ड फॉर हॉलीडे इन एक्सप्रेस फ्रेंचाइज. अगर किसी को जानते हैं जिसका होटल में इंटरेस्ट है, तो दिस होटल इज़ 3.5 मिलियन एंड उसकी रेनोवेशन में 1.5 मिलियन लगेगा टू ब्रिंग इट अप टू हॉलीडे इन स्टैंडर्ड to get approval from IHG. तो अगर किसी को जानते हैं जिसका इंटरेस्ट हो, तो प्लीज़ डू ईमेल मी vip@simadillon.com, या मुझे फेसबुक के ऊपर आप मैसेज कर दें. एंड उसके अलावा यस, मैं कमर्शियल रियल एस्टेट भी करती हूँ. तो अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट में आप कुछ तलाश कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, इफ़ आई एम एबल टू असिस्ट यू. आई बीन अ realtor for 17 years. बहुत वक्त हो गया है, 17 साल. और जब इतने वक्त जब डालते हैं, तो आप हाइज भी देखते हैं, लोज भी देखते हैं, आपने हर चीज़ देखी होती है. अगर आप में से कोई आके हमारे साथ, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस बुक कॉल्ड द 4 agreements, और इसका आज लास्ट चैप्टर पे हम हैं, लास्ट अग्रीमेंट पे हम हैं. तो which is to just do your best. तो आप हमें join करना चाहें, तो you are most welcome to join me on the screen and give your feedback. So let's see. We'll go on this one. And my Facebook friends, thank you for watching. All the people, Anu, Arvind, Sudhir. And yes, today we are talking about the book called 4 Agreements. And that's a Don Miguel Ruiz book. And today we are on the 4th agreement because we already covered the first 3 last 3 weeks. And today we are on the 4th agreement, which actually tells about how to do your best, no more, no less, regardless of any situation you're in. And don't look for the destination and enjoy the journey that you're in. That's more important because once we start doing anything to show to somebody and to get approval of somebody, you will never be satisfied. That expectation will never be fulfilled. So just do for you and make yourself happy, because that is more important in life, to fulfill yourself. And with that, we're also taking requests and dedications. If you want to send any requests on live, Facebook, or on air, the studio number is 214-817-3333. और अब जाने वाले click की ओर. If तो ये था गाना भागम भाग मूवी से लिया गया, तेरे बिन there is no desire. So desire is very important, but then that has to be only for yourself, not to prove and show anybody. इसके साथ हम जाने वाले छोटे से कमर्शियल ब्रेक की और बने रहिए हमारे साथ. आप सुन रहे हैं रेडियो कैरावान only on 700 AM and 104.1 FM with me, the one and only Saloni RJ Kalpur. मेरे साथ होती है मेरी co-host. This is Saima Dillon. Let's touch lives together. और जिंदगी में जो भी हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, do it with love, do it with passion. वो जॉब आप करेंगे जिसके अंदर आप हमेशा सुबह उठ के सोचेंगे कि oh my God, I have to go to work or I have to do this. जो बोझ आपके ऊपर चीज़ बन जाए, वो चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है. इसलिए do things which make you happy and which filled your life with passion and happiness. Absolutely. और वो जो होने चला है स्टूडियो की घड़ी में 1:59. हम जाने वाले हैं अब ब्रेक की ओर.
So फरजाना बहुत बहुत शुक्रिया. I thought आप मेरे शो के ऊपर आना चाह रही हैं, इसलिए मैंने आपकी रिक्वेस्ट देखी. तो I was waiting for you to join us, but hopefully you guys please feel free, कोई आके join करके और अपनी comments share करना चाहे तो please do. How are you doing? Yes. And Farah, thank you. I just saw your message. Yeah. बहुत बहुत शुक्रिया. And that is important. And that's the topic. Just So- stay with us because we're going to talk about that as how people. It is important phase, definitely important. But that comes only once in a month, once in a like bi-monthly or whichever you opted. But then the rest of 15 days that you do, you have to work with happiness, isn't that? Oh yeah. So stay with us because we're going to cover that as well. It's part of our topic too. You have a sound request? Cheers. तो कैसे हैं आप लोग सब? किसी any contribution from anyone? Let's see. So yeah, हम लोग हर Thursday को आते हैं and हम लोग different चीज़ों के ऊपर we talk about different things and we are streaming on LinkedIn and YouTube as well. So you know कोशिश यही है कि ये सब चीज़ें मैं अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए हमेशा करती हूँ. एंड आई थिंक कल्पना के लिए भी सेम चीज़ है कि ये जो जर्नी है ये हमारी खुद की बेटरमेंट की जर्नी है. और जैसे आप अपनी ज़िंदगी को आई फील कि ज़िंदगी में कल्पना कोई भी चीज़ हम किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत फील हो रही हो इंटरनली, किसी भी चीज़ की हमें प्यास हो, आरज़ू हो, हमारे अंदर हम कमी महसूस कर रहे हो, तो वो चीज़ हम अगर दूसरों में बटोरना शुरू कर दें और अगर वो चीज़ को हम दूसरों में बांटना शुरू करते हैं, and we start spreading what is lacking within us, then the universe automatically starts sending it your way tenfold. So one thing that I learned with this coaching is we always used to think that opposite of love is hate and opposite of empathy is sympathy, but it's not, because opposite of love is love, opposite of empathy is empathy. If you are missing something, love, that the opposite, you need to give love, right? That's the only way that opposite thing will come to you. If you're missing empathy or any passion, any desire in your life, the opposite of desire is desire. Whatever it is, that is what is missing. So you cannot think that there's something, you're going to look for some other thing in your life and you're going to find it. No, whatever you're missing, it's within you. You're not realizing it, and that's the reason people are just wandering around and they are disappointed and depressed in their life, and they think that and they're on the screens and spending some extra gadgets to just divert themselves. But you need to divert yourself by finding what's missing and what you're looking for. जो चीज़ भी जिंदगी में आप तलाश कर रहे हैं, वो हर चीज़ आपके खुद के अंदर ही मौजूद है. So whatever it is you seek, you search for in your life, it all lies within you. And जो दर पर दर हर जगह पे आप उस चीज़ों को तलाश करने के बजाय sit in silence and spend time. Sometimes I've been told, Kalpana, that people have a really difficult time sitting down and talking to themselves or listening to their own thoughts. All these things we have, this the mental chaos. Developmental issues like ADHD or OCDs, and that it's very hard to listen to your own thoughts sitting in a quiet place. But again, that needs a practice. It may not happen on a day one or day two, but constant practice will help you. And everybody needs to breathe. Absolutely. And we were doing like every other session when we were training, we were like, they were asked us to pause for a session and say breathe and just listen to your thoughts, the thoughts which is lingering in your mind, and something you need to catch them. And face your fears. Face your fears. Don't be ashamed of your past and just say it. It's okay. This is what happened with you, and that's okay. We're going on. So we have still have. I just didn't realize there is a last ad. And like, oh, we already came to the last ad. Okay. So anyway, abhi 25 seconds hai. We have 25 seconds before we go back on air. And
and then the show must go on. So thank you all. Yasmin, कैसी हैं आप? Thank you all for watching. We are going to be having Welcome back to the show. Heart to Heart सुन रहे हैं आप. With me, the one and only Saloni RJ Kalpana, और मेरे साथ होती है मेरी co-host. This is Saima Dillon, and let's touch lives together. And how we listen to this, you can listen to this show every Thursday, 1 p.m. to 3 p.m. only on your favorite radio station, Radio Caravan. और पता है हम लोग often बात कर रहे थे और कभी-कभी we get engrossed in the topic and we forget that we have to come back on it as well. लेकिन we had a caller and she said that working is important because you talked about that. I mean, we should not look for the results, but she said we have to look for the results as well because paycheck is very important. It is. I said certainly paycheck is very important, but that only you get twice a month, which is 15 days apart for every fortnight. But every 14 days that you're working, if you're only looking for that results, then you're not enjoying what you're doing right now. You have to enjoy the journey. Exactly. You need to enjoy the 14 days as well without worrying about. Of course, the money will, the reward will come with your actions, with your efforts, but you're not just doing for the results and for the reward. You're doing because you enjoy doing it. So why don't find something that gives you happiness as well? Because agar zindagi mein, for example, most people go to work every day just thinking about the pay day, right? And the money they will get from the work that they're doing. And they cannot wait. हर हफ्ते जैसे मंडे आ रहा होता है हम लोग बैठ के सोच रहे होते हैं ओह गॉश आई विश फ्राइडे होता आज ये फ्राइडे कब आएगा सैटरडे कब आएगा व्हाटएवर दे जिस दिन भी आपका पे चेक आपको मिलता है या आपका वीकेंड ऑफ आपको मिलता है आप बैठ के उस दिन का इंतजार करते रहते हैं एंड द थिंग इज दे आर constantly living waiting for that reward, which is the reward of the weekend or it is the reward of that paycheck. But वो जो वक्त बीच का है वो बीच के वक्त में आप अपनी जिंदगी का कितना कीमती लम्हा वो आप लम्हे जो हैं आप उनको जाया कर रहे हैं because you're just working for the reward and as a result you might not even enjoy your work, you might avoid आप खुश नहीं हो एंड आपका काम आपके लिए इतना डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है बिकॉज यू आर मिजरेबल अबाउट गोइंग टू डू दैट वर्क सो इट्स सो इम्पोर्टेंट टू एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ. And we agree that many of us live on paycheck to paycheck, and that unfortunately because we're doing show in America, we can certainly say that America is one of the highly paid income country, and जो भी हमें मिलता है अगर हम proper से plan करें तो काफी कुछ हम हासिल भी कर सकते हैं. But इसके बजाय भी I understand many people live on paycheck to paycheck, and it's important, of course money is important, but we're working for money. We understand that. Why don't we work in such a way that money can also work for us, which means first of all to enjoy your work और पैसे बचा के रखिए ताकि बाद में काम आए. तो ये सब चीजें छोटी-छोटी again this is all about small steps, taking small steps in your life to see the big that you want to see in your life. तो जिंदगी I mean एक मूवी थी कल्पना I'm sure आपने देखी भी होगी उसका नाम था फॉरेस्ट गंप एंड बिल्कुल टॉम हैंक्स की. तो वो मूवी के अंदर बहुत एक अच्छी एग्जांपल है. ही डिडंट हैव एनी ग्रेट आइडियाज मगर उसके पास कोई अच्छे आइडियाज नहीं थे मगर उसको एक्शन लेना आता था. तो वो हर वक्त कोशिश करता रहता था डिफरेंट चीजें ट्राई करता रहता था राइट एंड द रीजन ही वाज ऑलवेज हैप्पी was because he always did his best at whatever he was trying to do. He was वो कुछ reward की expectation से नहीं but he kept on doing the action and he kept on trying, taking action at just being alive, taking the risks to go out, go after your dreams, and that is so important because then you find the courage to try, right? Even agar aap you don't get you fail or you don't get the outcome or the result you expected, but you know what, you keep trying to go after your dreams and one day something good happens. Absolutely, and that's why we say do your best, no more, no less, and balance is very important as well. So चलते हैं अगले गाने की और इस गाने की रिक्वेस्ट की है रूपा ने. तो रूपा सुनना चाहती हैं सुनो ना संगे मरमर. तो लोग अलग तरीके से खुदा को याद करते हैं, राइट? सो
जैसे हमारे एक you know so Oh, we happy we day. had Hi, Kendra. Thank we you had so someone much. join us Yeah. and So, oh, thank you. And she's my actually mentor, the Kendra. She's on air, and she's watching me on live. Thank you, Kendra. Yes, I'm on air, and we are today talking about the four agreements. It's the book by Don Miguel Ruiz. I'm sure you're aware of that. And so today is the fourth edition. We already covered the first three topics. The first three edition, the agreements, and today is the fourth edition. That do your best, no more, no less. And thank you for watching. Thank you. so basically what it's about being grateful to our creator. And when you're grateful to your creator for everything that the creator sends your way, um, you when you express gratitude, you're letting go of the past and you're learning to live in the present, which is right here right now. जो भी ये लम्हा है, जो भी ये घड़ी है. And जो चीजें that's the best way to live. जो चीजें आपसे छूट गई हैं, जो चीजें आपकी तकदीर में नहीं हैं, you learn to let go of them because they don't benefit you anymore. And जब आप लाइफ में सरेंडर कर देते हैं ना, you surrender to the universe, you surrender to a God, you surrender to your creator, then आपकी जिंदगी में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, when you start flowing, तो खुद ब खुद you are taken into a direction which is actually more beneficial for you. And that actually, Kalpana, is my new mantra, that new word for me. It's my new mantra is flow. And that's what I'm working on. That's what I'm trying to do, is just flow. उस दरिया के अंदर just keep flowing. And जिधर भी जिंदगी आपको लेके जाए, Right. You just flow. And I just love that work. Omar, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for joining. Nasir, thank you for And watching. we Zareen, have बहुत बहुत शुक्रिया. few Thank you seconds. for watching. So, मैं start करूँ? Sorry. मैं start करूँ? Yeah, 1 second. Almost done. I'm going to slow down and then we can work. That's a beautiful song सुनोने संगे मरमर और इस गाने की रिक्वेस्ट है कि रूपा जी की तरफ से and So basically, we've been talking about the four agreements, and today is the final day. हम पिछले 3 हफ्ते से इसके बारे में बात करते आ रहे हैं. And the book continues to say कि life में जब आप अगर अपने the moment you surrender to life, that moment you change your trajectory. हर चीज बदल जाती है. The moment आप surrender करते हैं and आप एक दरिया बन के you start just flowing through life. Your life changes because then you let life take you in whatever direction life feels, or Khuda feels, or the universe feels is best for you, and you start flowing in that direction. And life just changes when you start flowing. बजाय इसके, because हर इंसान, we have come into this world to actually be happy. तो जिंदगी में अगर आप जब फ्लो करना शुरू कर देते हैं और जब आप ये फील करते हैं कि जो जिंदगी आपके डायरेक्शन में लेके आ रही है, that is what life feels is the best for you. Right, and that's very important. I think the surrender is actually a very good word, actually, what you have suggested, Saima, because our own divinity actually is so important that once we just dive into it and look into ourselves, that what's missing, and like you said, that we come into life to be happy, and we are into the actually feel good generation, right? Everybody wants to feel good, and we don't, we actually look at where we're missing, and we try to blame others, and we try to just have insecurities within us, we judge ourselves, we these all kind of emotions are just lingering in our mind only because we're not accepting ourselves.
once we accept ourselves and surrender whatever situation is coming our way, that's the only way that we can be right. And we have mm, uh, um, our friend on air, and she says the moment you surrender, you change the trajectory of your life. Yes, and that's the same thing that we want to say. Just when you surrender and embrace things that's coming your way, that's the only way when you just can change everything around you. The Absolutely. dynamics are going to change. आपकी जिंदगी बदल जाती है जब आप सरेंडर कर देते हैं ना, तो देन यू एक्चुअली बजाय इसके कि आप अपने प्लान्स और सब चीजें बना रहे हैं एंड वो जब पूरे नहीं हो रहे तो हम आप खुद को वी आर कंज्यूम्ड विद स्ट्रेस, राइट? एंड यू लेट गो and you are manifesting what you desire. Many of us, especially South Asian community, and I can say, looking at myself as I was a people's pleaser. I used to afraid of saying no, and I go out of my box to do stuff for others. And at the end of the day, I am not spending time. I mean, I was spending myself, but I could have spent more time, but just saying no to them, which was not necessary. And certain things are, yes, helping others is good, and if they reach out to me, I mean helping others, but not going out of your box and then leaving your own pampering yourself, and that's also not good for you. You need to learn to say no as well. And once I have learned, I still help others, I'm still there for them, but I've also learned that when it's not my time, I mean when it's my time, it's my time. I learn to say no, and I don't feel bad for it. I mean, I'm there for you, let me know when you need me, but at this moment I have businesses to do. That's very easy to say when you learn to express directly and very transparent. That's very important as well. See, here's another perspective too. We are all, as human beings, we are the creation of the creator, right? हमें खुदा ने बनाया है, तो अगर हमें खुदा ने खुदा के रूप में बनाया है, तो हम we are meant to live our life based on our own authenticity, जो हमारे अंदर की जो चीज़ है. तो जब ये सब रूल्स और रेगुलेशंस हमारे ऊपर इम्पोज होने शुरू हो जाते हैं, राइट? जब लोग आके ये बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम दोज़ख की आग में चले जाओगे, तुम वो नहीं करोगे तो you're gonna rot in hell. I feel that no one has the right to tell you that, because हम जब तक इस दुनिया में हैं, as long as we are here and we get up every day and we try to do our best, तो किसी का दिल नहीं दुखाओ, किसी दूसरे के लिए बुरा नहीं करो, वो एक अलग कैटेगरी आ जाती है. But otherwise, you know what? Don't be consumed with the right and the wrong, which is being forced upon you. Right. And in every, I mean, we don't mostly emphasize on religion or anything, but when I'm coming back in under one umbrella of religion, when I'm just discovering new things, I just recently know, because I think the people are having Ramadan, aap logon ka Ramadan, hamara Ram Navami, and then there's a Palm Sunday coming. So I learned something that in every religion, Saima, there are people who actually stop you and they block you and they just bully you to go further to do. Like, for example, I just recently came to know that the pilot was a person who actually knew that the God was not wrong, but then he was still being influenced by the people, right? And every people have that, and people around us, we know that what's right, what's wrong, but we still get our we are afraid of going forward, and we just get influenced with what people are saying because we want to please somebody or just get into fit in there. But no, you need to have your own identity as well. That's very important. और ये आसान नहीं है. It's not easy because you're judged. You're constantly judged. And that needs constant practice, because, like I said again, do your best in every moment and put an effort, because doing your best also needs putting in constant effort for yourself to do good for others if you want to. पर इस चीज को करने के लिए एक चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि when you are authentic and you are out there with the courage to live your life on your terms, then you better stay ready, because then you will be ostracized by people. You will be ostracized by community, society. आपको अपने because जो चीज हमारे कंफर्ट जोन के अंदर नहीं होती है ना, तो उससे हमें खौफ आता है, उससे हमें फियर आता है. when you see people who are questioning what you are doing on a regular basis, तो जब आप उस चीज से हट के कोई कर रहा होता है, आप अपने आप को उस चीज से दूर रखना शुरू कर देते हैं, because you feel, oh, you know what, that person is not right, because that person is questioning things that हम जो सदियों से करते आ रहे हैं, and that's a problem. So be prepared. Absolutely. And you know what, Simon, the good thing is, if you see yourself as a strong big ship and sailing on a big sea, and there are waves coming up and down,
unless the waves come inside the ship, it won't sink. The same thing. If the people are ostracizing you, if the people are bullying you, judging you, and bashing you, if that you're not letting those thoughts come inside, it doesn't matter whatever they say. As long as you are strong and you believe what you're doing and you're okay with it. So let those water doesn't come inside and sink you. That's very important to know. और मैं तो अपनी दोस्तों को सबको यही बोलती हूँ कि देखो अगर कोई मेरी बुराई आके तुमसे करे तो प्लीज मुझे मत बताना because I really don't want to know. You know, Absolutely. जिसको जो opinion रखना है, that's their problem. Absolutely, Not mine. that's true, Saima. And I would also like to say the Sadhguru from Isha Foundation is on mission to save soil. He has embarked on the journey to meet citizens, leaders, and experts as a lone motorcyclist covering 30,000 kilometers across 25 nations from United Kingdom to India in 100 days. Be an earth buddy, learn about his mission and the planet and the consciousplanet.org and do your bit to save the soil. And that's Sadhguru, the Isha Foundation. And with that, we're moving on to the next song. That's from the Gangster. So, hey Basharat, thank you for watching. Anu, बहुत बहुत शुक्रिया. Mohammed, Darsalan, बहुत बहुत शुक्रिया. Bharat, thank you for being Thank you, all here. my friends. Thank you, Mohammed. I Rahi, appreciate your kind Srividya, words. Anita, Arvind, So, Anu, zindagi mein, Kabir, Kendra. you don't need to prove anything to other people. As long as you're always doing your best. जब आप when you start doing your best, तो आपकी खुद की लाइफ, आपकी खुद की जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी. And जब when we need to say no, say no. When you need to say yes, say yes. But you know what? No matter what you do your best. Do what you feel is right. Don't deny yourself. और जब आप अपने माइंड के अंदर इन चीज़ों का बीज बो देते हैं तो फिर वो चीज़ें कल्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं. तो आपके पहले 3 एग्रीमेंट्स जो हैं, impeccability of word, let's see, be impeccable with your word, don't take anything personally, don't make any assumptions, always do your best. All these agreements will only work if you always do your best. Don't expect that you will always be impeccable with your word. Your routine habits are too strong, firmly rooted. But you know what? Just do your best. You know, when we do best, that's when we become a master of ourselves. And that's very important to know. That's why you keep doing your best all the time. Absolutely. And as parents, we love our children, right? So God loves us too. बट जब हम बहुत सारी चीज़ों में हर वक्त बैठ के ये सोचते रहते हैं, you know, वो जो तराजू के ऊपर हर वक्त हम होते हैं. Again, coming back to Rumi's point, Rumi, what he says, the first rule of Rumi, he says that when you love yourself, you are going to love the God. When you don't love yourself, you're going to start, God didn't give me anything. I was praying him all the time. And that's what happens. I think that's the first love of Rumi also, right? Yeah. The first rule of Rumi. Yeah, so that was another book that we had done a few months back. It was 40 Rules of Love by Alif Shafak. It's a book based on Rumi, Maulana Jalaluddin Rumi and Shams Tabligh. And agar aapko you enjoy reading, then get that book, 40 Rules of Love. I really feel that book right there, Kalpana, it was life-changing for me जब मैंने उसे पढ़ा था, because वो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे ऊपर बोझ बन के मेरे सोल के ऊपर हावी थी, मैंने बहुत सारी चीज़ों को शेड कर दिया वो बुक को रीड करके, and I became free. My soul became free. And I'm happy too the way I am, because it's a journey, and I've learned a lot of things. I'm still in the journey of learning a lot of things, but I'm certainly happy, and I always have enjoyed, to be honest, whatever I do. I try to do my best, but there are things happen to everyone, right? And we are imperfect people, and I'm happy, I can certainly say. And I don't know what's stored for me in the future, but whatever I have right now, I have in my treasure account, in my happiness treasure account. I'm really going to preserve it and
learn every day. And that's what our energy is. It is something we need to preserve and we need to guard, right? Right. गैंगस्टर मूवी से लिया गया था ये गाना और अब हम बात करेंगे क्योंकि हम बात करें कि why we have to do best all the time. Because Simon, when we do constant effort by doing this best every single day, no matter कोई भी situation हो, I think this is when we become master and master for ourselves. Because देखो एक जिंदगी में होता है we have situations changing every time, right? Every time it keeps changing. Good afternoon, Ronika. Good afternoon for connecting with us. Thank you. And so one is the things show us a lot of transitions in the life. We struggle. We have some people have turmoils in their life. Some people have happiness. So if you don't receive love, you won't be able to give love, right? That's one important thing that we learn first of all. But when you have transition going on in your life, if you don't learn from your transitions and if you don't transform from them and do your best, you won't be able to transcend. And transcending is very important as well. So these three things come in line, like struggle, the transitions in your life, whether it's good or bad, or happiness and sadness. These transitions, it happens with everyone's life. So when we transform, and I love that the way I transform right now. And I won't say that I'm the best, but I'm doing my best. I'm doing my best, and my goal is to transcend to a next level by helping me first of all, and then help others also. And so these three things need to be the three T's in your life is very important. It happens with everyone. Trust me, if you don't learn from your life. That's why mistakes are okay. Mistakes happen with everybody. Failures happen with everybody. And I would say failures are important as well, Simon, because this is where is the foundation for you to grow and like again, all the topics again are interrelated. The impeccable words that we do. These failures are also important. For you to learn new things in your life. So if you're impeccable with your word, if you don't take anything personally, if you don't make assumptions, if you always do your best, then you're always going to have a beautiful life. You are going to be in control of your life 100%, because the four agreements are a summary of, it's a mastery of transformation. You transform. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी जो है वो एक हेल है, दोजख बनी हुई है, आपकी हर चीज रॉन्ग हो रही है, तो you're the only one who can transform your life from heaven and transcend into heaven. Because जब आप अपनी जिंदगी को बदलना शुरू करते हैं, तो आपकी जिंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है. आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आपकी आपके सोल का कनेक्शन विद योरसेल्फ, हर चीज जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है. Very beautiful said. And like I said before, one of the callers was talking about we are human beings, right? And we tend to make mistakes. Yes, we do. And that's why there's a term called pashu in Hindi, which says that animal, and we are evolution of came from animal. And only when we control our mind, and that's when it's called pashupati, which means we have now control on our body and mind, and not everybody can be Pashupati, and but doesn't mean that everybody has to do and then don't feel bad about it. So what you do, you are responsible every minute of your actions and of your thoughts. Even if you don't put actions, your thoughts, you're responsible for that. बिल्कुल, आप बिल्कुल. एंड जिंदगी में मैं इतनी दफा गिरी हूँ कल्पना, इतनी चीजें फेलियर्स हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, जिनको मैं कॉन्स्टेंटली बोलती हूँ कि दे आर जस्ट एक्सपीरियंसेस विद आउटकम दैट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग. बट आप जब जब गिरते हो, आप खड़े होते हो, and you keep going and you get back on your feet and you keep moving forward, and you simply do that because you don't sit there in that space feeling sorry for yourself. Right. And that is key. When you realize ke बजाय इसके कि हर वक्त आप victim mindset के अंदर रहो and you are a victim forever, you just get up and you say कि ये तो जिंदगी का हिस्सा था. Okay, तो ये शायद life बोल रही है कि शायद this is not the place to be. Get up. Stop being a victim, stop feeling sorry for yourself, just embrace whatever life is bringing. और अगर आप मेरी तरह बनना चाहते हैं, तो आप दरिया की तरह बन जाएं and just flow. बिल्कुल गिरोगे तो you shouldn't feel bad about it, and that's what makes Sana strong as well. And then I love the way she embraces the life situation, and we all learn from every part of life. And
With that, we're going on a commercial break, my friends, and we're going to be on air again at 2:35. Stay with us, and जो information commercial break में आती है वो भी काफी important होती है, तो हमारे साथ बनी रहिए. आप सुन रहे हैं रेडियो कैरवान with me, the one and only Saloni, RJ Kalpana, and Saima. Thank you for your kind words, Kalpana. So I think this is so cool, right? हम जब खुद ये books और ये चीजें कर रहे होते हैं तो So we are learning too every day. हम सीख भी रहे हैं, and मैं तो बैठ के अभी ये बातें कर रही हूँ तो I'm on a high. मैंने अपने आप को खुद elevate कर दिया है. When we exchange thought, like again, I said words are impeccable. बिल्कुल. They're in the air and they're exchanging good vibrations as well. And that's why make the vibrations with the good words that you exchange with anybody around you. Absolutely. Even your thoughts, even if you're not exchanging someone, even your thoughts sometimes make the aura a positive or negative depending on what you're thinking. And that's something I've learned. I have my own setbacks too, which I'm just trying have overcome, and I'm very happy that I was able to do that. And I would say I'm really happy. I don't, like I said, I don't know what life is going to show me in the future, but whatever life has given me right now, good, bad, or a good whichever way, I'm happy that it happened with me because I was able to embrace it and able to come out of it. And today, if you're happy with yourself, you're content with yourself, you are, because you're a product of your experiences. जिंदगी के जो भी उतार चढ़ाव, जो भी चीजें जिंदगी आपके रास्ते लेके आई, you're a product of, you're a package, you're being put together, constructed from all those different experiences, and it's not easy. It is not. And you know what? It says that it's not about how you started. Yeah. It matters how you end the situation. And that means that initially everybody have they just hesitate to put one step. It's hard. The baby steps are hard. The first steps are always hard. But it matters how you are walking with it, how you're ending the journey. I mean, again, it's about the journey. It's not about the destination. But how you end anything matters a lot. So I think we need to learn from our life, everybody, and those who are in depression, who have a suicidal thoughts, who are going through something. I think why they are lacking because they think that we are not worthy enough, probably, and they feel self guilt or they self blame or blame others. I think this game they need to come out of that cocoon and think that yes, you are worthy. Every life matters, and your life matters as well. And I'll take one call. Good afternoon, Radio Caravan. How are you doing? And जिंदगी में जो भी करें, करते रहें, कोशिश करते रहें. Keep working on improving, on living a better life. Thank you so much. Stop worrying about the future. Keep your attention on today and stay in the present moment. Just live one day at a time. Always do your best to keep these agreements, and soon it will be easy for you. Because you know what, right here, right now, this moment, it is the beginning of a new dream. So ये लम्हा, इस वक्त गलतियां भी होती हैं ना, mistakes भी होती हैं, तो it doesn't matter. It's now the past. Don't live in the past. Live in the present moment. ये जो लम्हा है, ये जो वक्त है, इसमें जियो. इसमें जियो. जो कल हो चुका वो गुजर गया, and it does not matter anymore. But what matters is tomorrow. Not tomorrow. What matters is right now, this moment. So this moment is the moment of a new dream. Thank you so much. So इसी वक्त कल्पना, ये जो moment है ना, right here, right now, this is the beginning of a new dream for you, for me, for everyone watching. Absolutely. So today, right now, anything that is actually make a plan or think what you're going to do right now is a moment, like Saima said. Today is a new beginning for any thought that's lingering in your mind, which you want to really put an effort and do your best. Not just by listening, but really put an effort to do your best. Even if it's a small thing, it's a big thing. I think the small is big, of course. So today is the moment right now. So everyone who's watching, अगर आप इसको watch करें, तो मुझे कल्पना को हमें join करें, because ये moment is the beginning of a new dream, of a new journey, of something brilliant
that is going to happen in your life, in our lives. So आज कुछ बहुत amazing होगा. Let's believe in it. And next week जब हम मिलेंगे तो फिर we will discuss कि किसके साथ कौन सी amazing चीज हुई. And I don't know, Kalpana, do you feel it right now? Because something amazing is going to happen today? Definitely, because that's okay. Yes, I do. I do feel that when I exchange something, when I pass on the energy, and then I'm receiving the same energy within me, and I feel so happy. It's something that, of course, everybody feels happy when they try to do a good best effort. But one thing is, do not wait for the results. If you're doing best now, right now, the beginning of the new Yes. thing, do not wait for the results. Just think that you're doing for yourself to feel happy Yeah. right now where you are. And So, thank you, Varsha, Sandeep, Everyone and who's Venkatesh. watching, जो join कर रहे हैं, आप हमें join करें कि something amazing is going to happen in your life today. Believe it. And next week, connect and share with us. All right, we came back. हम आ गए हैं. We are back. और देखो, और फिर हम बात करते हैं, जैसे कहते हैं कि मैं और साइमा एक्चुअली भूल जाते हैं टॉपिक्स में, और हम भूल जाते हैं हम किधर हैं, क्या कर रहे हैं, हम अपनी हाई के अंदर. एग्जैक्टली एक्सचेंज कर रहे होते हैं. लेकिन हमारे कॉलर ने कॉल करके बहुत अच्छी बात कही. उन्होंने कहा कि वो अक्सर हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और वो चाहते हैं उनके दोस्त भी सुने. एंड आदम जी, आपके लिए जो आपने गाना रिक्वेस्ट किया है वो जरूर हम प्ले करेंगे. पर अब जो टॉपिक हम बात करें कि जैसे कि हम बातें तो खैर हम करते रहते हैं, लेकिन इसका मकसद यही है कि देखो, जिंदगी जर्नी है. चाहे आपको डेस्टिनेशन में कहीं भी जाना है, आप 635 लो, 75 लो, या फिर 121 लो, कोई भी लेना है, जर्नी एंजॉय कीजिए. ताकि वो, क्योंकि जो सब, एक और बात है कि जब मंजिल पहुंच जाते हैं, मंजिल टेम्पररी है, लेकिन जर्नी इज लाइफ लॉन्ग. जर्नी इज लाइक फॉर अ लॉन्ग टर्म. सो व्हाई नॉट एंजॉय द जर्नी, ताकि वहाँ पे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ गम होते हैं, कुछ खुशियां होती हैं. लेकिन अगर आप एंजॉय करोगे, बजाय ये सोच के कि भाई ये हमारी जिंदगी में क्यों आया, ये नहीं आता तो अच्छा था, ये वापस आता तो अच्छा था, ये वापस आए तो अच्छा है, ये सोच के आपका दिमाग खराब हो जाएगा. इसलिए जैसे अभी आपने कहा ऑफ एयर कि राइट नाउ इज अ मोमेंट Yes. to do anything that you really want to do. And one important thing is, do not look for the rewards and the results, because that's not what doing the best means. Doing best is just enjoy what you're doing right now. Whether आपको exercise करना है, आपको मूवी देखना है, आपको दोस्तों के साथ मिलना है, चाय पीना, अकेले बैठ के किताब पढ़ना है, अकेले कहीं, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में है, do it right now. Enjoy that. Absolutely. That's more important than आपके दिमाग में वो सारी चीजें रखे कि मैंने ये किया, कुछ नहीं हुआ, ये बेकार करना. नहीं, not for the results. You're doing just to enjoy the moment. And for everyone who's listening, please join us in this moment where I believe that right now, this second, it's the beginning of a new dream. And so believe in yourself, believe that something good is going to happen in your life today. And I want to encourage the people who are watching, who are either watching us on social media live or listening to us on the radio, that आपकी जिंदगी में अगर आप believe करते हैं कि आज कुछ चीज amazing होगी, तो you know what, something amazing is going to happen. And what we want you to do is, next week जब हम call के ऊपर आएं, when something amazing happens to you in your life today, then call us next week and share with us कि आपकी जिंदगी में कौन सी amazing चीज आज हुई, because you believed in yourself and you believed in the fact that something amazing is about to happen in your life. So I will share too कि आज मेरी life में क्या amazing चीज होगी, and we'll share next week. बिल्कुल, why not? And इसी तरह चलते हैं अगले गाने की और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें आई है आदम जी की तरफ से. आदम जी सुनना चाहते हैं राहत फतेह अली खान का कोई गाना. तो हमने लिया है आजा नचले मूवी से ओरे पिया. तो चलिए हम सब मिलकर सुनते हैं ये गाना. So, जिंदगी में हर चीज. First of all, thank you everyone for watching. Hey Kiran, thank you for watching. Asif, Samira, कैसे हो आप? Long time. Hey Manira, how are you doing? So thank you everyone who's watching. So जिंदगी में believing in yourself is absolutely imperative. It's the key to living a life well lived. Believe in yourself. Believe कि आपके लिए अच्छा होगा. Forgive yourself
forgive वो जो चीज़ें आपने होल्ड की हुई हैं कि यार मैंने ये गलत कर दिया, मैंने वो गलत कर दिया. Believe in yourself. Believe and forgive yourself for all the mistakes of the past, because they were just experiences. Wrong choices were made. But कोई बात नहीं, you know, गलतियां कर दी हैं, कोई बात नहीं. जो भी चीजें हैं, intentionally कुछ बुरा किया, unintentionally कुछ बुरा किया. और अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ गलतियां करना भी अच्छी है, क्योंकि गलतियों से ही तो हम सीखते हैं. अगर सबकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो, ऐसे मुझे लगता है कोई इंसान नहीं होगा अभी तक. सबके साथ गलती होती है, चाहे वो इंसान कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी वीक हो. पर अगर आप सीखोगे नहीं अपनी गलतियों से, और आपको इफ यू गोइंग टू स्टार्ट शेमिंग योरसेल्फ एंड ब्लेमिंग योरसेल्फ और अदर्स, it's not going to help any good to you or others. So, Believe in yourself. believe in yourself, you know. exactly. And जो हो गया, forgive yourself. रिश्ते खत्म हो गए, दिल टूट गया, you know, wrong choices, किसी के लिए आपने बुरा भी कर दिया, तो जाके माफ़ी मांग लो. You know, माफ़ी मांग के ख़त्म करो बात को. मैं यही बोलती हूँ कि किसने क्या गलत कर दिया, क्या नहीं किया, कब तक grudges hold करेंगे, right? Let अगर वो अपनी go. जिंदगी मायने रखते हैं, if you want to just, अगर आपके दिमाग में वो बैठे हुए फंसे हुए, even though वो दूर हैं, लेकिन तो फिर why don't you just pick up a call and talk to them. अगर आपको नहीं रहना अपनी जिंदगी में उनको, तो that's fine, वो it's a different choice. But if it's really bothering your mind, then pick up a phone and talk to If them. someone is important, it's bothering you, then you know what? Just understand, que forgive, ask for, actually not even forgive and then ask for forgiveness. Say sorry. Thank them for being, so the people who are in your life and the people that you love, thank them for being in your life, for being a part of your life. Your children, thank your children and tell them that, hey, I'm so happy that you are a part of my life journey. Thank people, say sorry to people, even if you have done nothing wrong, but आप वो रिश्ता आपके लिए value रखता है, just go and say sorry. And tell people around you that you love that, you know what, they are enough. And ये हम नहीं करते हैं. We don't tell people that, you know what, you are enough. And we need to do that. We need to tell people that we are enough. We need to tell people we love, that you're sorry. We need to tell people, hey, thank you for being a part of my life. And I want to thank all of you for being a part of my life journey. And I like my friends who are watching me right now, Jyoti, Reena. So everybody, thank you so much, Varsha. It's really important, because there's small things in the life which we forget, is acknowledging and appreciating them. Even if it's a small thing, even if you think that they have helped you, they came to you and they cooked something and you like them, just appreciate that. It may not be big for them. It may not be big for you, but it's such a big thing that you appreciate it, that you acknowledge it, and you're just communicating again impeccable words, because Yeah. you're exchanging a good vibes around you. It's coming from you to them. And कीड़े निकालने के बजाय अच्छाइयाँ ढूंढें. अच्छाइयाँ You know, कितनी चीज ये कॉमन है. आप दावतों पे जाते हैं या किसी के घर खाने पे जाते हैं, और फिर आप खाने में कीड़े निकाल रहे होते हैं, right? A lot of people do that. A lot of people do that. So आप होते कौन है कि आप किसी दूसरे की चीज के अंदर कीड़े बैठ के निकालें? Who are you to do that? You know what? नहीं पसंद आया मत खाओ, कोई बात नहीं. Alright, और अब हम बहुत ही कम वक्त रह गया है हमारे शो का, और बहुत अच्छा लग रहा है आज एक्चुअली बातें करके about how we can exchange wisdom with others instead of just criticizing, because nobody is perfect. Again, we know that, like I always say on my show, and it's worth repeating, is perfection is a bird which keeps flying in the air, which never lands. It's a stealth which keeps flying. But we as a common people, we just look for, we desire that should come to us. No, it's never going to come to us. We all are people who just learn from our life. So just keep flowing, like we said, and then today's the moment. Then without expecting any rewards, do one small thing, like pick up a phone and then call somebody which is really bothering you, which you want to really think that they should be in my life. And if you just end the relation completely and you're okay with it, that's a different thing. लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो आपकी जिंदगी में वापस आए और आपको बॉदर कर रहा है, तो why not pick up a phone and talk to them? और किसके घर जाते हो तो उन्हें एक्नॉलेज करो छोटी छोटी चीज़ों को. अरे आपका ये खाना अच्छा लगा, आपका मुझे बात करने का तरीका अच्छा लगा, आपकी हॉस्पिटैलिटी अच्छी लगी. तो छोटी छोटी चीज़ों की कदर कीजिए और उन्हें बताइए लोगों को.
So that can part of it is taking the first step of doing the best. सो गॉसिप जब करते हैं ना, ये बहुत कॉमन हैबिट है, लोग समझते हैं कि हमारा जो टेस्ट है खाने में ना वो बहुत परफेक्ट है, राइट? हर कोई अपने आप को बहुत हरफन मौला समझता है। तो और आप लोगों के घर दावतों पे जाते हैं, आप उनके खाने में कीड़े निकालते हैं, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मत खाओ, इट्स सिंपल, राइट? और इट्स नॉट योर फ्लेवर, डोंट ईट इट। मगर जब आप गॉसिप करते हैं एक दूसरे के साथ बैठ के, और जब आप चीज़ों में खामियां और कीड़े निकालते हैं, तो gossiping is literally like black magic, because you are putting black magic into the universe. You're putting bad words, bad vibes into the universe. So जब आप वो bad vibes इस दुनिया में डालते हैं, तो वो आपके अल्फाज जो है ना, दे आर नॉट इम्पेक्केबल। वो आपके खुद के अंदर सबसे पहले डैमेज कर रहे होते हैं, आपके खुद के अंदर नेगेटिविटी पैदा कर रहे होते हैं व्हेन यू डू दैट। एंड द थिंग इज दैट हर कोई फ्रीडम के बारे में बात कर रहा होता है। All around the world, different people, different races, different countries, they are fighting for freedom. But the question is, what is this freedom? Are we really free to do what we really want to do? हमें लगता है कि freedom है, but society का freedom, expectations का freedom, ये we are not really free, because we can't express our feelings, we can't become the person that we want to be, because we are so much under pressure. Absolutely, and when people do what they do without thinking the consequence, and we know what happened just 2 weeks ago on Sunday show, one of the show that happened around the world, everybody watched it. Somebody expressed their feeling on stage, and so it's very hard to do something like that, and how you just take it and how you receive it. It's all different how you react to it also. Lekin again, Simon, this is a small things. Again, if you don't use it, again, we all know that that if you don't use it, we lose it. The brain cells work that way. If you don't use every cell in a brain, it actually dies, and we lose that. So that's the same thing. If you don't use, make a use of your time, and then acknowledge and embrace people around you, and then even if it's a small change that you want to do, it just why don't you just do it instead of just sitting there and talking about the food that you were talking. A couple of years back, my husband was talking about in his company colleague, उन्होंने इनको खाने पे बुलाया था उनको, तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है, तो मैं घर पे खाऊंगा। तो भाई ठीक है यार, अच्छी बात है, आपकी पत्नी अच्छा खाना बनाती है, तो उन्होंने कहा कि हमें बुला लीजिए। खैर अभी बुलावा तो कभी आया नहीं, लेकिन दैट वाज मैंने कहा कि दैट वाज वेरी रूड ऑफ देम टू से लाइक दैट, बट उनकी अपनी वजह होगी, जो भी उनको खाना पसंद नहीं है, या फिर वो फूडी लवर था, जो भी था। लेकिन ये चीजें अक्सर हम कह देते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है, क्या सोचता है, लेकिन आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट कि अगर कोई कुछ करता है, क्योंकि उनके बिहेवियर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को ही कंट्रोल कर सकते हो। तो व्हाई डोंट यू डू द स्मॉल थिंग्स दैट विल मेक यू हैप्पी, and that's what is the best, and because doing best is actually you're actually mastering yourself. तो हम लोग हर वक्त बैठ के कितना लोगों से सुनने में आता है कि यार वो बचपन के दिन जो थे ना, उसकी बात ही अलग थी। तो कभी आपने सोचा है कि वो बचपन के दिन, वो उन दिनों की कौन सी चीज थी जो आपको याद आती है? सो बचपन के दिनों में देयर वाज टोटल फ्रीडम। As children, we could say whatever we wanted to say, right? वो responsibility तो जो भी थी, but एक फ्रीडम था, you could express yourself, right? आपको पानी में आपको कीचड़ में नहाना है, आप कीचड़ में नहा लेते थे। आपको बारिश हो रही है, आपको उसमें भीगना है, you would do that, right? बिल्कुल बिल्कुल, because you were being yourself, जो दिल चाहता था वो उठा के खा लिया, जो बोलना है वो बोल दिया। तो वो जो एक फ्रीडम है, वो हमारा जो स्पिरिट है और हमारी जो रूह है और जो हमारा सोल है, हमारा सोल जो है वो फ्रीडम को ढूंढ रहा होता है। और वो फ्रीडम जो है, वो वी आर द ओनली वंस हु कैन गिव आवरसेल्व्स दैट फ्रीडम। बिकॉज जब हम सोसाइटी की बंदिशों में अपने आप को बांध देते हैं, तो दैट्स व्हेन हमारा फ्रीडम जाना शुरू हो जाता है, एंड वी बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड आवर कम्युनिटी। But that is not how we are supposed to live our life. We are That's supposed to be free. Ignorance is a bliss also, because awareness is very important, it's very powerful, but sometimes ignorance is also bliss. Again, it's about disparity in this um,
around the world that is exist, and we need to take it, we need to surrender towards it. हम ये नहीं कह सकते कि हम ऐसे क्यों सोचते हैं, वो क्यों नहीं ऐसे सोचता, बचपन में ऐसे थे अभी क्यों नहीं ऐसे हैं। और ऑफकोर्स बचपन में हम चीखें चिल्लाएं, हमें शायद ज़्यादा इतने डांट पकड़ना नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हम अब करें, क्योंकि people know that now we have some kind of sense of knowledge and we cannot do whatever we want to do. Freedom is very important, but what kind of freedom? Freedom within you is more important. Just let your thoughts flow easily. When we say let go is a very simple word, Sana, but when you really implement it and follow it, it's a big thing to do it. It's a big emotion towards it. Vast majority of effort goes towards it. You need to practice constantly. That's when you can assertively say let go. वरना let go दो अक्षर है, लेकिन कितनी बड़ी चीज है, सोच है, जिसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है. See, it's all about freedom. It's being free. It's being free emotionally. It's being free. A spirit wants. When you accept yourself, then you can be free, I would say. When you accept Because आपका completely. spirit चाह रहा है, right? क्यों हम लोग मिड लाइफ क्राइसिस से गुजरते हैं, क्यों हम क्राइसिस से, आई थिंक एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें जो जेनेटिकली नहीं आ रही हैं, आई थिंक दोज आर कमिंग बिकॉज आवर स्पिरिट वांट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ फ्रीडम टू बी एबल टू. I would say mind wants more than spirit, because spirit से ज्यादा मुझे लगता है कि mind ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि your soul wants peace, right? Yeah, And you're not at peace because when you can't be your authentic self. Right, that's true. But लेकिन अगर हमें जैसे कहा कि हम अपने माइंड को जब काबू कर लेते हैं, तो आई थिंक उससे ज्यादा वो चैनलाइज हो जाता है हमारे स्पिरिट को भी फ्री करने का. लेकिन ये माइंड ही है, क्योंकि आसपास इतनी डाइवर्शंस है, इतनी चीजें चल रही है साइमा, कुछ लोगों को सिर्फ वही काबू पा लेते हैं जो प्रैक्टिस कर पाते अपने दिमाग पे, दिलो दिमाग पे. वरना क्या होता है कि फिर जैसे स्पिरिट चला गया बॉडी से, तो वी जस्ट कॉल इट एज अ बॉडी, राइट? वी आर ओनली कनेक्टेड बिकॉज ऑफ अ स्पिरिट व्हिच इज कनेक्टिंग टू अ माइंड. Right. So because the thing is we are looking for freedom to be ourselves, to express ourselves. Right. But जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, तो we are doing things to please others, just to be accepted by others, rather than living our lives to please ourselves. तो फिर हमारा freedom चला गया, right? So when our freedom is gone, we are not at peace, we are not happy with ourselves. So the worst part of us, कि हमारे पास जब वो फ्रीडम नहीं रहता, तो then we are just miserable. बिल्कुल, क्योंकि कितना दबाव होता है सोसाइटी में भी, स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी में अभी भी, कि शादी से पहले ये करो, ये मत करो, स्पेशली फॉर द वुमेन, एंड देन शादी के बाद ये करो, एंड देन यू ऑलवेज एक बंदिश में बंधे रहते हो कि हम करेंगे तो क्या होगा, हमें लोग क्या सोचेंगे, हमें माँ बाप ने ये कहा था, अब ये नहीं करेंगे, बच्चे, उसके बाद बच्चे पैदा होते, बच्चे क्या सोचेंगे. ये सारी चीजें चलती रहती है, जद्दोजहद सबकी जिंदगी में, शायद सबकी जिंदगी में ना भी हो, काफी लोग जिंदगी में चलती है. लेकिन इससे बाहर आने का मैं एक तो बता, आई कैन से टू ऑल द पेरेंट्स स्पेशली, हो सकता है कि सबके लिए मायने ना रखें, लेकिन raise your children, whether it's girl or boy, raise your children to be brave rather than to be perfect. Raise your children not to just study for getting a grades and job. Raise your children to study, to enjoy, and then have them think that कि क्या जिंदगी में आपको जरूरत है, क्या चीजें हैं जो आप पहले खुशी पाइए, फिर वही चीज आपके बच्चों को बताइए या अपने आसपास लोगों को बताइए. Raise them to be enjoy that moment right now. Again, not in the past, not in the future. Stay in this moment and enjoy that what you're doing right now. वो जिंदगी जहाँ पे ना कोई लीडर है, ना कोई फॉलोअर है, जहाँ पे सिर्फ आपका सच है और आप अपने सच को जीते हैं. So you can be free. So according to the book, as we are getting ready to end the show in a few minutes, there are 3 things that lead people to become master of their lives. And the first is the mastery of awareness, to be aware of who you really are, and आपकी खुद की क्या possibilities हैं, आपकी खुद की क्या खामियां हैं, आपकी खुद की क्या चीजें हैं, self awareness. The second is the mastery of transformation, how to change, how to be free. The third is the mastery of intent. Intent means it's part of your life that makes transformation of energy possible. It's the one जब आप अपनी energy को जब आप ठीक करना शुरू कर देते हैं, then you are at peace with yourself, you're happy with yourself, because intent is life itself. It is unconditional love, and जिंदगी में unconditional love जो है, it blossoms you. Absolutely, and we can only love ourselves unconditionally, Saima, because sometimes we have those kind of
boundaries when we just think of somebody else. They have to provide this to for us to love them. So I think again we have a conditions applied. So, but when we first of all, the way we love ourselves unconditionally, we should try practice one day at a time to even do the same thing to others as well. With that, we move on to the next song. And before the song, I would like to say that Radio Caravan is bringing you a new segment with Usha ji. She is known to help people on many aspects of their life with her psychic excellence, matter to do with relationship issues, career directions, business ventures, money matters, etc. So if you are interested, you can ask your questions live on air every Wednesday between 12 to 12:30 p.m. Log on to ushaji.org for more information about her. So we have 5 minutes to start. The last के 1.5 minute में then we'll come back on and we'll end the show. Okay. I was supposed to have a staff meeting today. I'm glad it got cancelled because I was like, I'm just going to go home and take rest. So that event on last Thursday went very well. Yeah. I thought of actually coming in the middle. Yeah. मुझे लगा था मैंने मनु को बोला था कि मैं आ जाऊंगी बीच में लेकिन but it was going so interesting मैंने कहा चलो I'll continue because I don't get opportunity to stay here for. Nice, So, nice. Not कितने many लोग आए? people came लेकिन फिर भी जो लोग आए थे actually it was good. Yeah. A lot of people left after the lunch because after the lunch there were breakup sessions where Okay. they're going to be panelists speaking about their specifications, whatever they are good at. Like जैसे कॉलेज में स्कूल्स में स्क्वायर कैंप्स होते हैं ना वैसे था. So a lot of people left after lunch, but until then it was good. Yeah, and then my weekend was busy with this training, and I have a lot of workshops too to do. So that's nice. So what are your plans now? With the life coach thing. Hmm. I actually did, to be honest, to add value to the show. जब मैंने करना शुरू किया, then I understood when diving in all the other spectrum to it, कितना मैं कर सकती हूँ. So I said, अभी तो मैंने सब break क्योंकि when I was doing a radio show, a lot of people asked me on Messenger, are you a life coach? Are you a counselor? Are you a psychiatrist? मैंने कहा none of them, but I can do at least life coach right now, so which is going to add value to what we do. And but now I'm thinking. On the parallel, I can even start doing it because she said you can start doing a business with it. You just have to register yourself, and invite clients. I said okay, मैंने अभी नहीं लेकिन धीरे से करूँगी मैं. I'll go. मैं पहले इंडिया जाके आती हूँ क्या I don't know. I need to tell Shafak कि मैं समझ इंडिया जा रही हूँ. Yeah, because that's a process too. Yeah. Good. So I enjoyed the workshop, I mean the training, and I have workshops lined up too. Wonderful. So the Kendra, who is actually the mentor of this coach to Badari, she said, you're already into it, you're already doing it. So I said, no, I mean, I'm doing a different perspective, but this is going to just add, it's kind of like how you scaffold it, right? So that's what I was looking into it, but it was nice. It was really good. Hi Saroja, hi Roja, and अभी हम जाने वाले हैं, चलते हैं, you ready? It's 58 now. So, ये लिया गया था गाना गलियां, बहुत खूबसूरत गाना है एक विलन मूवी से. तो चलिए हम अब हमारे शो एंड होने का वक्त हो चुका है एंड आशा करते हैं कि आपको शो अच्छा लगा होगा कि जो हम बात कर रहे हैं द 4 एग्रीमेंट्स फ्रॉम डॉन मिगुएल रुइस. सो इट्स अ वेरी वंडरफुल बुक और आज जो हमने 4th एडिशन के बारे में बात कर रहे थे 4th एग्रीमेंट के बारे में. That do your best no matter what and no more no less and balance भी बहुत ज़रूरी है. Don't do too much. So work smarter than work harder. So that's more important as well. The freedom जो जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, it is the freedom to use our mind and to use our body to live our own life instead of the life जो के belief systems के through we are told to live. So it is important for us to keep living our best life, to surrender yourself to whatever life is bringing your way. And when you do that, you just start flowing, you start going. जैसे मैंने पहले भी बोला कि
मुझे खुद को ऐसा फील होता है कि I'm like this river which is fluid and which is just flowing through wherever the journey of life is taking me, embracing change, embracing whatever comes my way, regardless of caste, color, creed, religions, cultures, breaking barriers, doing whatever it is that is authentic to us and that makes us jive. Absolutely, and embracing and putting an effort is only way where you can divert the energy, because energy cannot be the energy can only be transferred. So put embrace this, and that's where you can just change this energy from negative to positive. And with that, we sign off the show today, and we're going to meet again next Thursday. This is Saima signing off. All right. Well, thank you all, Abhisar, Anamika, Saima, Lakshmi. Thank you all for being here. Rakesh, Kiran, Asif, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for being a part of our show today. And we come to you. We come to you every Thursday from 1 to 3. हम radio पे हैं in the Dallas area. You're able to listen to us on radio as well, 104.1 or 700 AM. And अगर आप हमें join करना चाहें, मैं ये Facebook live करती हूँ. I'm also on YouTube streaming live right now. So thank you all for being here, for being a part of the show, for being a part of my life, and for being a part of my journey. So इसके साथ I say I bid you adieu. Thank you, and